My God, what is happening? After ages, centuries even, we are back as foretold by the ancients. The man with the viscosity and consistency of viscous and consistent things, Suresh Man. Thank you. I No, like to use a scary intro. oh, that was seemed as if you're vomiting on me. But anyway, that's I apologize. It's the way of the ancients. okay. Ladies and gentlemen, of course, the one and only, the Internet King, the What? Count, the Colonel, the Dracula How of dare you horror, call me ghost that? stories, Jose Kowako. Yes. Before you say count, I want you to pronounce count properly. Don't say it too fast because then it Oh, sounds like you're saying something else. yeah, But yeah. anyway, Got it. good to see you, Suresh Menon, looking very tasty. Like I'll Oh, bite you. Ha! I'm already converted. What? You're a zombie. I can't bite Yeah. you. Anyway, क्या तुमको दिखाई सुरेश को दिखाई नहीं देगा unless he's monitoring the streams. But देखो आज के स्ट्रीम में क्या क्या होता है. देखो ऊपर ऊपर उधर देखो कैसा हुर हुर करके घोस्ट स्टोरीज है. इधर देखो इधर स्कल मेरे ऊपर सूरज के बाजू में स्कल और इधर नीचे इधर भी कुछ होने वाला है. मतलब मेरा घर में नहीं इधर स्क्रीन के नीचे जब कैसा हंस रहे बे. तुमको दिखाई देगा थोड़ा जब ऐसा कुछ नीचे कुछ बोला आता तो है. एनीवे आज के कुछ शो कुछ पे आता है। करण जोहर नेक्स्ट फिल्म कुछ कुछ आता है। it's the sequel to कुछ कुछ होता है. I would like to give you some information before we start the stream. The Zoom link is in the description. Please go there. What amazing artwork today by Daksh on screen rant. Oh my god. Oh my god. What is he on? Some people asking, "Kaun sa pukte ho bhai?" Wow, it's amazing. It's really something else. He's made a making of etc. Cyril Diabrio. He will be bunking today. I mean, Oh, he's very exhausted from yesterday's stream and cracking all those jokes. I think exhausted. Period. Yeah, he's exhausted, so he's taking a break again. Cyrus Saukar said that he's having dinner, so he might join us. Let's see. But welcome everyone once again. The ghost story sessions are back. Sorry, sorry, I Oh, made too much noise. The people in my house are like, "Shut up! Why are you screaming like that?" But Suresh, yeah. hold Tell on, me. hold on. I just want to tell you something. Do you know what I want to tell you? No, I don't. Can you guess? Oh, uh, I love ah, you. परिणीति छोकरा. आई मैं आ गई क्योंकि चाहत चावला ने बोला ही कुछ बोला ही नहीं 14.98 भेजा उसने कितना स्वीट आदमी है वो दिख गया. हाँ सिंगापुर डॉलर्स. उसने कुछ किया और उधर नीचे कुछ हुआ दिखा क्या. या मैं खुद मिस किया. आई डोंट नो हुआ मैं भी कि मिस नहीं. किया. और दिखती नहीं हुआ. हुआ कि नहीं. सॉलिड. एंड थैंक यू सब लोग जिन्होंने हमें हेल्प किया. हमारी जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें से आप लोग आके ये सब विंडोज़ का पूरा हेल्प किया आपने. आपका हम बहुत आभारी है अपन लोग. थोड़ा मिक्स किया मैं हिंदी हिंदी. एनीवे सुरेश आप एकदम मस्त लग रहे हैं नूडल्स की तरह. शुरू करते हैं. लेट्स या लिसन टू एवरीबडीज गोस्ट स्टोरीज. अरे यस थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. आप जो भी अच्छे लोग हैं थैंक यू फॉर कमिंग. Just so you know, today again we did another session. अगर you know अपना panelist तो सुरेश, you never know कुछ भी हो. सिर्फ सुरेश का करेक्ट. viscosity और consistency, viscous और consistent. नजर मत अगर डालना. भाई विस्कोसिटी अरे देखो जिंदाबाद. देखो कौन है. अरे मैं कौन है. मैं ही हूँ. ये घर पे मैं ये सब कर रहा था. यू डोंट हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम. Oh God, किसी ने मैसेज भेजी 1 मिनट में ढूंढ रही. किधर है किसने भेजी. प्रवंजन सेज हाय परिणीति चोपड़ा गेट टू सी ऑल अगेन मस्त स्टोरी सुन को मिलेगा इस साल को भी लाइव स्ट्रीम्स बैक अगेन. लाइव स्ट्रीम अपना लाइव स्ट्रीम को लाइव स्ट्रीम बोला. कितना स्वीट आदमी है. मयूर सेज विस्कोसिटी जिंदाबाद. हैप्पी वीकेंड गाइस. यस व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट.
तो कड़कुड़ू शुरू करें क्या सुरेश जी? ओ सिरिल डी एप मैसेज भेज रहा है चैट में कि वोंट बी जॉइनिंग ओ टुडे गाइस, सॉरी, सॉरी। किसदा लॉरी। ओ तो सुरेश एक्चुअली मेरी एक सहेली के साथ वो है, वो काम कर रहे हैं, ओ ऐसा बोलने में अच्छा। क्या जाता है। तो वी मिस यू सुरेश, आई मीन सॉरी सिरिल। सिरिल सुरिये। जी, सुरीली। इट्स वो अ बहुत सुरियल। वही सुरीली है वो ना, इसलिए या सुरील मिस यू। सब लोग किसेस बट यू डालो कैन, चैट में या सुरील के सिरिल लिए। एटलीस्ट यू कैन गिव अ सुपर चैट हियर मैन। कैसा रिवर्स पैसा निकालने का निंजा टेक्निक, डोंट डू दैट ना। वो करेगा, वो करेगा बिकॉज ही अरे इज फीलिंग सिरिल तो एक्स्ट्रा गिल्टी। आई थिंक ही तो मे जस्ट गिव फॉर $500 और समथिंग, नोइंग हिम। सिरिल प्लीज यू आर ऐसा प्लेइंग मत विद हिज कर। गिल्ट, डोंट डू नो दैट। नो, $1000 डाल दिया, अच्छा नहीं लगे। अच्छा ओके, तो सी दिस इज ए परिणीति, तू निकलना इधर से, मैं काम कर। ओके, हाँ, वो मैं ही था। अरे वापस। आए दिमाग है कितना अच्छा है, देर रात भर में यही देखते रहेगा। सत्यम सेज हाय होजेन सुरेश लव स्ट्रीम्स, बोथ ऑफ यू मिस द स्ट्रीम्स, कीप देम कमिंग। मैं परिणीति को अंदर ही रखा। तो सुरेश देख, हम दोनों हैं, एक बंदा आएगा या बंदी आएगी तो उसको इधर में डालेगा, ऐसा एकदम काटकुट जैसा दिखता है इधर, बट जब वो आएंगी ना तब अच्छे दिखेंगी। आप, मैं अच्छा आपको दिखाती। तो शुरू करें क्या, बोनी शुरू करें? जरूर 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 प्लीज। सुरुल बोलने वाले थे आप? नहीं ठीक है, जरूर सुर जरूर सुर अनदर ड्रिंक फॉर सुरेश। जरूर। शुरू में ही जुरू जुरू बोल रहे हैं। आई वाज जुरिंग नॉट स्लोरिंग। मेरे को एकदम डर लग रही, देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट कॉल इज लाइक दैट, वो बोनी वाला कॉल कुछ भी हो सकती ना, समझ रही? अरे आई एम आंधे आंधे आंधे, मैंने बटन दबा दिया। बाकी सब सुरेश घर पे सब ठीक ना? अरे आ बहुत गया, आ बढ़िया। गया। क्या मेहनत किया है तूने, क्या क्या देखना, ये फ्रेम्स। बटन बटन काटकुट काटकुट। ये मैं ऐसे फ्रेम चुराए वो कौन सा ऐप है, पिक्सलर। उसमें फ्रेम्स है, अंदर जाके मैं इरेजर या सब निकाल दिया। अमृता P203 डैश, अरे ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ट्वीट्स लिखती है शायद। ओह। अमृता जल्दी आ जाइए। अरे वाह व्हाट अ फ्रेम, व्हाट अ फ्रेम सर। थैंक यू टेक सर। अ बाउ। भाओ 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 वाह वाह भाओ वाह भाओ वाह वाह भाओ वाह भाओ वाह भाओ वाह भाओ। वाह। भाई मेरा ऑडियो लो नहीं है, सुरेश का ऑडियो हाई है। ओह ठीक है, मैं थोड़ा कम करता हूँ। Then I'll only speak like Jackie Shroff योगिवेट tonight. आमला, चटपटा मामला। Hello. हेलो, Yeah. Hi. हाउ आर यू? Fine. I'm so sorry. I'm so nervous. बाप रे, आप पूरा एग्जाम का पेपर साइड में डाल रहे हैं आप। ये जो मैं कॉलेज में तब का है। अच्छा, कैसा है अमृता? कहाँ से कॉल कर रही है? Fine. मैं फोन से? दिल्ली से। अच्छा, फोन से, दिल्ली से, वेरी गुड। आपका है क्या कुछ Big गोस्ट fan. स्टोरी? थैंक यू, वेरी काइंड। Yes. कौन सा, क्या हुआ? So basically, actually ये story about my friends. Like friend, उसके घर पे हुआ था sister. Basically, so there are 3 siblings. ये सबसे छोटा है and ये like atheist, इसके बिल्कुल भी believe नहीं है God के ऊपर। So एक बार क्या हुआ कि मैं लाइक कि कॉलेज में थी, मैं ऐसे बात कर रही थी एंड आई सडनली सॉ कि ये जो एथीस्ट था, जो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था गॉड पर, ये ताबीज़ों के साथ आ गया, बिल्कुल ओके, ताबीज़-वाबीज़ के साथ। तो लाइक कि क्या हुआ ये सब? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस लाइक 3-4 मंथ्स पहले बेसिकली ही लाइक उसकी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब खराब होने लगी एंड शी वाज़ लाइक कि ब्लड ड्रॉप, बीपी हाई, मतलब बहुत बुरा हाल। एक ऐसा पॉइंट आ गया था यहाँ पे लिटरली सांस नहीं ले पा रही थी। सो शी वाज़ लाइक रियली स्कैर्ड कि क्या, मतलब पूरी फैमिली बहुत डर गई थी कि क्यों हो रहा है सब एंड ही वाज़ आल्सो स्कैर्ड। बहुत सारी चीज़ें होने लगी। खड़े-खड़े बेहोश होने लगती थी। अपनी स्टडीज़ भी ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाई इसकी वज़ह से। मतलब बहुत बुरा हाल था एंड दे वर लाइक रियली वरीड कि ऐसा-ऐसा क्यों हो रहा है? So after that, one night what happened is like she was like sitting over the sofa and she was like कुछ नहीं कर रही थी, मतलब बैठी हुई थी and फिर बहुत tired थी and suddenly she started screaming like बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगी थी and they all were like क्या हुआ कि चिल्ला रही है and वो इतने the thing is वो इतनी weak थी कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती थी या फिर कुछ ओके, काम नहीं कर पाती थी but at that time she started screaming so loudly कि मतलब वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी they all got scared even पड़ोसी तक आ गई देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि and at that time
they thought like कुछ तो गड़बड़ है, because the thing तो is है उसका भाई यूएस में, एंड उसके भाई ने सजेस्ट भी किया कि साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाओ, कंसल्ट करो, एंड कंसल्ट भी किया, एम्स तक लेके गए थे उनको, प्रॉपरली हर तरह की ट्रीटमेंट दिया, कुछ ही नहीं हो रहा था। एंड दैट टाइम फिर आई रिमेम्बर लाइक ये हुआ था 2019 के मार्च में। तो मार्च में उसने मुझे कहा कि देख मैं 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल कंप्लीटली मैं किसी के कांटेक्ट में रहूंगा, मैं जा रहा हूँ करके। मैंने कहा ठीक है। एंड मैंने उससे वापस बात किया तो उसने बताया एक्चुअली उसके चाचा एंड उसके जो भी फैमिली मेंबर्स थे घर पे, मतलब उनको गाँव में लेके गए। एंड देन एक अजीब सी बात पता चली। सो बेसिकली जब भाई यूएस से वापस आया तो परफ्यूम की बॉटल जो होती है वो लेके आए थे वापस। क्या मतलब सॉरी, मतलब खरीदा था वहां से कोई ब्रांड का बहुत। एंड उस टाइम पे इन्होंने कहा ठीक है ठीक है। उस टाइम पे वो रात को कहीं घूमने गई थी एंड वो वहां से वापस आ रही थी, तो आसपास कोई शमशान घाट था। So basically, she was wearing that perfume and all, and she told the whole story to this tantric. And then like tantric said like maybe एक point होता है दिन में जहाँ पे परफ्यूम से या बहुत खुशबू होती है, जब इतना एडिक्टिव खुशबू होता है कि घोस्ट और स्पिरिट्स कैन बी लाइक अटैक द अट्रैक्टेड पर्सन, टू इट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टेड परफ्यूम की वजह से? परफ्यूम। सो आई मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब पढ़ा, मुझे अच्छा लगता है ऐसी स्टोरीज पढ़ना, तो मैंने ऐसे अच्छा, ज़्यादा मुझे मैंने अच्छा लगता है ये देखा। सब स्टोरी सुनना। फिर तो लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ये हुआ कि उन्होंने फिर बाद में बात किया उनसे कि क्या इश्यूज हैं, और तो पूछे 1 हफ्ते की पूरी पूजा पाठ जो भी था वो हुआ। एंड उस टाइम पे ये बंदा बहुत इसकी फटी पड़ी थी कि लाइक क्या हो रहा है मेरे घर पे, और ये घर पे ही था दादी के साथ। बट उस टाइम पे एक अजीब सा घर में एक अजीब सा सन्नाटा होता है ना, एक अजीब सा पिच साइलेंस की लाइक कि मतलब वो एक अजीब सी नेगेटिव प्रेजेंस उनको वो होती थी। समझ गया। आफ्टर दैट उन्होंने पूरा वो पूजा पाठ किया, ये उसके 3 महीनों के अंदर उनकी एक्चुअली हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई। एंड थैंक गॉड। उनके लाइक काफी इम्प्रूवमेंट हुई, वो सब ठीक हो गए। एंड लाइक 2021 में उनकी लाइक शादी वादी हो गई, सब सेट हो गया। माय बट गॉश, हाँ और ये वो ये सब सब परफ्यूम बॉटल का क्या परफ्यूम हुआ? से शुरू हुआ है ये सब। लाइक आई थिंक मे बी आई डोंट नो, लाइक मे बी कुछ स्ट्रेस की वजह, मुझे इतना इतना ऐसे यकीन नहीं है ऐसी चीजों पे। मैंने उससे या बात किया था, उसने कहा नहीं अब तो मुझे यकीन हो गया, अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी ऐसा। तो उसने इतना एनी बोला कि एक्चुअली बहुत एडिक्टिव स्मेल होती है ना किसी परफ्यूम की, बहुत एडिक्टिव हाँ स्मेल। हाँ। एंड शी लव्स ऑल दिस थिंग लाइक कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। एंड उस टाइम को वो ऐसे वापस आ रही थी ऐसे बिल्कुल लगा This के is a good way फ्रेंड to से get मिले someone to करके। stop using too much cosmetics and buying too much of perfume and stuff. Anyway, अभी तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हाँ है, फिर ओके, ठीक है। बस तो इतना ही हमें हमें इतना ही जानना था। थैंक यू सो मच अमृता फॉर शेयरिंग थैंक दैट यू। विद अस। थैंक बहुत काफी यू। बढ़िया, बहुत बाय। बढ़िया। इसमें ड्रामा था, इमोशन था, ये और परफ्यूम परफ्यूम भी था। था। परफ्यूम था, कॉस्मेटिक्स था। चलो टेक केयर थैंक अमृता, यू, थैंक यू सो बाय। मच। बाय बाय। बाय। वाओ, क्रेजी। So now कट they'll have कुट to make करके। anti-ghost perfumes. नो आई डोंट नो, I don't know how much of this is. Have you ever, but I mean, unrelated, but Suresh, have you ever had someone walk by with so much perfume that it sort of triggers your bowel movement? Uh, Not really. Not me either. I just thought I'd Yeah, throw that that's out there. But very strange. But yeah, I believe this happened to a friend of yours. one of my friends, he's affected by this. Too much Apparently, who's perfume, ना not उसको there bathroom today. जाना है. नहीं, मैं है इधर. But anyway, crazy. This is different. The year started differently. वो perfume वाला goes. बीच में somebody said also that half the story she told on a different stream. Half was Yeah, but तो very थोड़ा interesting to know interesting. what sort of perfume brands can be क्या क्या made होता for, है, या you या. know, no, Oh, the grave perfume. what rubbish. Carry to the grave with you. Grave perfume. All right, let's keep going. Vishal Agnihotri, Boni Hogere Lea, Boni man. Boni Hogere, hello gents, how's it going? It's going all right, yeah. As decent as it can go. Arey, I forgot I have to be Yeah. ready with Zap. the buttons. All right, who we got? It's a transformer. Oh, oh yeah.
Man, but the last session we did, hello, He's hello. already what is- waving. He's cleaning his screen or he's waving at us. One of the two. He must have been. Doesn't remind you of audio. Jigar. Yeah. Akshit, आपका ऑडियो करेक्ट हो रहे ले नहीं अभी भी नहीं. Can you hear us? If you can hear us, show that. That's no Suresh, don't Thumbs try to up give दिखा देना. technical advice है ना. अब आ जाएगी, अब आ रही है। अब आसपास का दम यार. वेलकम हाय हाय वेलकम. पागल हो गया. अरे मैंने ना सर सुरेश सर को मैसेज भी किया था, सर ने रिप्लाई भी किया था। मैंने शायद आपको लिंक्डइन पे किया था बर्थडे पे, और एक उसके लिए किया था उससे पहले। वो क्या कहते हैं, मैं सोच रहा था एक मैंने ना वो ये होते हैं ना वो जो घोस्ट बस्टर्स टाइप लोग होते हैं, एक बंदा था, उसके लिए मैं आपको बोला था कि आप उसको बुला सकते हो आपकी स्ट्रीम पे। हाँ करेक्ट. आपने लिंक्डइन में मैसेज डाला. I'll check that up and I'll send it to Hoezaay also. So yeah, we could do that next time. घंटा वो कुछ तो बेचता स्टोरी पे ना है मतलब जल्दी से आ जाए, मेरी बहुत छोटी सी स्टोरी है और उसमें ना मतलब अनयूजुअल है, मतलब पैरानॉर्मल कह सकते हो आप, बट कोई ऐसा गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं है। तो मेरे ऑफिस जहाँ मैं जाता हूँ, डिस्कनेक्ट नहीं है घोस्ट. आई एम जस्ट किडिंग. नहीं सुनो तो सही, एक बार सुनो यार. हाँ, तो उसमें क्या है कि मतलब बड़ी अनयूजुअल सी चीज है। एक लिफ्ट है हमारे ऑफिस में, मतलब जो बिल्डिंग है पूरी एनडीएच करके एक बिल्डिंग है वहां पे सीपी में। तो उसमें मोस्ट सारी लिफ्ट्स नई लग चुकी हैं, सिर्फ एक ही लिफ्ट है जो पुरानी है। अब उस लिफ्ट में क्या है कि वो लिफ्ट ना 10th फ्लोर पे हमेशा रुकती है, ठीक है। जबकि जो होता है ना कि होता क्या है बिल्डिंग्स में, जैसे कि ऑल्टरनेट फ्लोर्स पे लिफ्ट होगी, ठीक है, कोई लिफ्ट है जो सारे फ्लोर्स के लिए है, तो इस तरह से उसे कर रखा है। तो वो जो लिफ्ट है उसको ऑल्टरनेट फ्लोर्स के लिए रख रखा है, और वो 10th फ्लोर उस पे सेट नहीं है, लेकिन वो हमेशा उस 10th फ्लोर पे रुकती है। प्लस दूसरी चीज ये है कि उस लिफ्ट में जो लाइट है ना वो 10 बार बदलवा चुके हैं वो लोग, लेकिन वो लाइट हमेशा कड़कड़ कड़कड़ करती रहती है। क्या करती रहती है? खराब है जैसे, और जबकि वो लाइट्स हर बार बदलवा चुकी है। So I think I feel कि आपके जो ऑफिस के लोग हैं और बिल्डिंग का जो केयर टेकर है, उनको लिफ्ट को एकदम थरो चेकिंग के लिए भेजना पड़ेगा कि लुक्स लाइक देयर इज सम इलेक्ट्रिकल इशू विद दैट एंड कैन बी। सुरेश, मैं वही बोलने वाला था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ यार। नहीं, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब आप लाइट बदलवा चुके हो, उस लिफ्ट को आपने सेट नहीं कर रखा फॉर 10th फ्लोर, बट स्टिल वो उस पे रुक रही है, तो ये प्रॉब्लम लग रहा है। अक्षित ने एक शॉट में इसको इलेक्ट्रिशियन स्ट्रीम कर दिया। भाई आपको टेक्निकल गुरुजी के लाइव स्ट्रीम्स में कॉल करा। थैंक यू। और कल वाला स्ट्रीम बड़ा सही था, मतलब कान मस्ती टाइप्स वाला था। सॉलिड बहुत अच्छा था। थैंक यू सर लाइट फीडबैक के लिए। थैंक यू अक्षित। हाउ स्वीट, इंटरेस्टिंग। but it's very scary, you know, such a lot of stories, and एक फ्लोर में रुकना लिफ्ट को, normally there is some issue, even if there's a problem, why it should happen only in the 10th floor? But Suresh, this now makes me wonder how many people have thought that there's like a ghostly thing going on or something paranormal when it's just an electrical issue. I'm just saying, but normally even we have seen that, you know, with some certain ghost films, we have seen that cackle and all happen when they're around certain things. So you never know, it's an energy, as I told you before. But you're telling me कि भूत को सबको डराना है, वो जाके इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ फिडल करता है, then he does something with the doors, then he comes and goes, hell, that कितना टाइम है भूत के साथ? I'm not mocking, I'm just saying. Cyrus had said this to me. Maybe ये भूत बहुत शौकीन है। We'll quickly move on to the next caller. मैंने खुद अपने जोक पे गंदा हंसी दिखा। सुरेश सर के लिए पॉपकॉर्न का जुगाड़। थैंक यू दीपांकर, वेरी स्वीट ऑफ यू। किधर है मेरे को चाहिए पॉपकॉर्न। तेरे घर पे ही रहेगा पॉपकॉर्न, और किधर रहेगा? कुछ इंतजाम करता हूँ। I have this stream deck, I should connect it. मैं करेगा अगले हफ्ते से। मैं थोड़ा जल्दी में था इतना सी। I don't know how many people of you have noticed, but the background is moving. Yes, उधर देखो, देख, see right under there, the trees all are moving. Hi, welcome to today's lecture, everyone. We will be doing Pythagoras theorem. Hello. Yes. कौन बात कर रहा है? Hi Hoezaay, hi Suresh sir. Hi Prajwal. Hi Prajwal. I saw his name there. कैसे भाई?
बढ़िया बढ़िया। आप कैसे टेंशन हो? मत लो, कितना और टेंशन ले रहे हो भाई, बैठ रिलैक्स। जाइए। और आज आपने प्रिपेयर करके आया है कि नहीं? आपका थीसिस रेडी Yes, है yes, कि I नहीं? have a ghost story. I have a Oh, ghost story. I was Jesus. talking about your assignment. Ghost story तो अच्छा, yes, I was making that actually. I was making See, that. I was making that. आप what do you study? What are you studying What the for? hell? I study in Jamia Millia Islamia. Okay. I'm doing MCA, Master of Computer Applications. अरे वाह, Oh, क्या full बात है। on. ऑल द बेस्ट टू यू। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका मास्टर ऑफ घोस्ट सुनाइए। एप्लीकेशंस। Okay. So this is a story. Back in 2019, after end sem examination, we went to Lucknow. तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे, तो मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो हम लोग का वापस आना हुआ जब, तो करीब शायद 11:15 और 45 ऐसे कुछ हो रहा था, 11 से 12 के बीच का टाइम था। तो हम लोग जब जो स्टेशन है वहाँ का, इलाहाबाद में 2 स्टेशन है एक्चुअली। एक हम लोग का एक सेंट्रल स्टेशन है, एक प्रयाग स्टेशन है। तो जो प्रयाग स्टेशन है वो तो थोड़ा सा स्पूकी टाइप का है, तो मतलब वो एकदम सन्नाटा रहता है रात में। तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ कुछ ना तो कोई गाड़ी मिलता है, ना तो कोई ऐसा ओला रहता है। और बैक इन 2018 19 कुछ ओला वगैरह था नहीं इलाहाबाद में। तो हम लोग वहाँ पे जब उतरे वहाँ पे, तो एकदम ऐसा सन्नाटा, एकदम खाली होता नहीं ऐसे, वो बस ऐसे वो स्ट्रीट लाइट आ रहा था ऊपर से, एंड नथिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 फ्रेंड्स थे हम लोग। फिर मेरा घर भी वहां से स्टेशन से 1 किलोमीटर से, हार्डली वन 1 किलोमीटर, एक या आधा किलोमीटर से। तो वहां से फिर कहे कि यार अब यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो हम चलते हैं, ऐसे ही पैदल चलते हैं। तो जब स्टेशन के आगे जाइए, तो हम लोग का जैसे एक टाउन है, गायत्री नगर। तो उसका उसकी जो एंट्री है, उसके बाहर एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, इस्लामिक ग्रेवयार्ड। तो जब वहां पहुंचे, तो एक फ्रेंड ने कहा कि यार मुझे प्यास लगी हुई है। सबसे पहले तो उसको मारने का मन किया था, क्योंकि 12 बजे वहां पे उसको ऊपर से प्यास लग रही थोड़ा है। होल्ड करो तो भाई, मर तो नहीं तो भाई जाओगे। हाँ। नहीं, इट्स एक्चुअली हम लोग को तो प्यास पहले से। गुस्सा आया, क्योंकि अब थोड़ी ही दूर बचा हुआ था घर। हमने कहा यार चल घर चल के पी लेंगे, क्या दिक्कत है। कहा नहीं यार, मेरे को अभी पानी पीना है। एंड उसका भी वो थोड़ा, अब मुझे नहीं पता वो फन में बोल रहा होगा, कैसे बोल रहा होगा। बट उसी टाइम क्या हुआ, वहां पे एक जूस वेंडर खड़ा हुआ था। जूस वेंडर, यू नो, द नाइट, ये रात को। वही, दिस इज स्ट्रेंज। एंड रोड ऐसा नहीं है कि वो एकदम सन्नाटी थी, वो स्टेशन के बाहर निकलिए तो वहां थोड़ा सा रहता है। तो बट जूस जो वेंडर। हम लोग का जो घर, टाउन का जो ऐसे एंट्री है, रोड है, तो वो उतना खाली नहीं था उसमें, मतलब हार्डली एक दो कार और ऐसे आ जा रहा था। तो वहां पर वो जूस वाला खड़ा था, तो उसने कहा यार चल पीते हैं ना यार, मुझे प्यास भी लगी और हो जाएगा अपना काम, सब ठीक है। तो हम लोग पहले उसे समझाया, कि हम लोग को थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि यार रात का टाइम है, इतने कौन लगाता है। बट एज आई टोल्ड यू कि वहां से एक दो कार वार ऐसे ऐसे आ रही थी इधर उधर, तो हमें लगा यार चल चलते हैं, हम्म, है ना। बाकी 3 लोग हैं, कुछ होगा तो देंगे घुमा के एक आध। देख लेंगे, हाँ। मतलब जूस वाला ही तो है। तो ऐसे वो जैसे यहाँ पे ग्रेव यार्ड है, तो उसके जस्ट सामने उसका ऐसे ठेला उसका लगा हुआ था। क्या तो लगा हम हुआ गए था? पहले, ठेला। ठेला ठेला, यू नो दैट, सॉरी। लॉरी। हाँ। तो वहां पे लगी हुई थी। तो हमने उससे मांगा, तो उसने 3 गिलास दे दिया, और फिर हमने हमने पी भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा कुछ ऐसा इश्यू नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब पैसे देने का टाइम आया, तो जो फ्रेंड बोल रहा था मुझे प्यास लगी है, तो उसने उससे पूछा कि भैया कितने हुए। वो अपना वो कुछ नहीं कर रहा है, वो वैसे से अपना जो है वो, शायद वो मौसमी के जूस थे, शायद, हाँ मौसमी के जूस थे। तो वो ऐसे ही अपना काट रहा है। वो कितना हुआ भैया, कितना हुआ। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो वैसे से काट रहा है। तो अब वो से गुस्सा है, बोले कि बता क्यों नहीं रहा कितना हुआ, क्या दिक्कत है। तो वो अचानक से उसने, मतलब कि वो, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। वो ऐसे होता है ना कि मोटी आवाज थोड़ी थी, और वो बोलता है 25 रुपए। और तब तो वो जो लड़का था जिसने वो बात कर रहा था, वो बेहोश हो गया वहां पे, वो गिर गया। 25 और रुपए। एज ए, Oh man, हाँ, Suresh, why do एज you एन, have to do that? यू नो, नेचुरल इंस्टिंक्ट, हम दो थे, हम वहां से भागे, हम वहां से भागे। और जो ये बेहोश हुआ था?
यस उसको उधर हम ही लोग छोड़ वहां दिया। से, हाँ हम लोग वहां, लेकिन वेट जस्ट वेट फॉर इट। लेकिन क्या करें, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो। अब करेक्ट आप फेयर करेक्ट। इनफ, चलो ठीक आप है। भाग जाएंगे, आप नहीं रुकेंगे, आप यू विल नॉट वेट, है ना। तो वो हम लोग भागे वहां से। तो जैसे ना मैंने बताया ना कि वो हम लोग के टाउन की एंट्री रोड है, तो वहां पे टर्न है, हम वहां पे जाके थोड़ा सा भागते भागते वहां के जाए, तो थोड़ा मतलब कि सांस लेने के लिए वहां हम धीरे हुए, तो मेरे से वो कह रहा है यार वो तो पीछे ही छूट गया। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ वो वही छूट गया है। तो फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू हुई, यार अब क्या होगा, क्या करें, क्या कुछ उसमें कुछ मिलाया वगैरह तो नहीं था, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसको वहीं पे मतलब कुछ ऐसा तो नहीं था वहां पे उसको पकड़ लिया हो, या फिर जूस में उसके पर्टिकुलर कुछ डाल दिया हो। तो हम लोग ऐसे ही ऐसे करके ऐसे है ना देख रहे हैं, झांक रहे हैं ऐसे साइड से कि है कि नहीं, तो वो वहीं पड़ा हुआ था। और मुझे याद है कि मेरे पास मेरा एक बैग था, वो ये मेरा बैग था वो, और उसके और एक बैग था जिसमें हम लोग के कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो वहीं छूटा हुआ था। तो हमने देखा ना वो वहां पड़ा हुआ है, एंड जूस वेंडर वाज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। तो जूस हमें निकल ये गया। लगा कि हाँ, वो हमें ये लगा कि वो किसी को बुलाने गया है, इसको उठा के ले जाएगा, है ना। तो हम लोग को ऐसा लगा, तो हम लोग ने कहा यार कि ऐसा तो नहीं है यार कि उसको लेते जाएंगे। तो हम लोग ने कहा कि चल यार दौड़ के जाते हैं, उसको लेके आते हैं, है ना। वी वेटेड फॉर 2 to 3 minutes की, अब डर तो लग ही रहा था थोड़ा सा ना, मतलब लग रहा था, डर लग रहा था कि यार क्या होगा अब, कैसे। तो बस मैंने कहा यार चल दौड़ के चलते हैं, उसको ले आते हैं, फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज ही सर मतलब कि कुछ भी यार दोस्त है अपना, घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या किया क्या नहीं किया। करेक्ट। हम लोग दौड़ के गए, उसको लेके आए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम उसको उठाए वहां से किसी तरह कंधे पे उठा के, वो तब भी वो कॉन्शियस नहीं था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब उसको किसी तरह से वहां पे लेके आए, है ना। वहां पे बैग पड़ा हुआ था, उसको हमने वहीं छोड़ दिया, उसको वहां पे हम लेके आए, फिर बकायदा उसको, और फिर हम चलते ही गए, फिर रुके नहीं रास्ते। आफ्टर दैट क्या हुआ मुझे नहीं पता। यू ऑल डिडंट फाइंड आउट कि कौन था करके ऐसा नहीं, कुछ? कौन था कहीं नहीं था। और उनका ठेला किधर था? ठेला किधर था? दैट अ नहीं वो कार्ट वही नॉट था, लॉरी। वही था, वो वही ठेला था। जो था वो वही था। और उसमें और फ्रूट सब कुछ थे। फ्रूट और वो सब ना थे? वो जैसे ही हम लोग जब भागे तो वहां से गायब, वहां था ही नहीं। एंड बिलीव मी, वो उसकी आवाज जो है वो अभी तक मुझे याद है, वो नॉर्मल वॉइस नहीं थी। डोंट डू इट प्रज्वल। सुरेश, ओह यस यस, गॉड। लाइक दैट, दैट सो हैवी नाउ वॉइस। आई टेल यू जी। नाउ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार बस स्टॉप में 3-4 लोग खड़े थे, तो एक आदमी वहां पे था, तो हकलाता था, तो बगल वाले आदमी से पूछ रहा था, सिर्फ उसी के हाथ में घड़ी था, तो बोला टाइम क्या है। 3-4 बार पूछते टाइम क्या है, तो हकला के पूछ रहा था, तो उसने बताया नहीं। तो बस आ जाते, वो बेचारा चला जाते बस में। तो जो अंकल उनके साथ खड़े थे दूसरे बंदे के साथ, बोलते हैं उसने आपसे टाइम पूछा और आपने बताया नहीं। तो बोलता है अगर मैं बताता तो उसको लगता मैं उसका मजाक करता और मुझे मार देता, मतलब ही वाज आल्सो स्टैमरिंग। So even the other guy would have thought he's making fun of him. So he said, I didn't say that. So similarly, maybe इस आदमी का वॉइस उसको पता है कि लोग व्हाट द आवाज सुन के हेल। डरता है। और ये बहुत बार हुआ होगा कि कोई उसकी आवाज सुन के बेहोश हो जाता है, और वहां से वो इसलिए भाग गया कि वापस मुझे मारना पड़े, तो या इसलिए वो भाग गया। yeah, we could have thank you for the explanation, It Suresh. What could would be, we do sir. without it? It could, yeah. But You should be, Prajwal, I think you should be a scientist. he is इतना he इतना is a ज्यादा bit of a लॉजिकल। scientist. Not a Prajwal, bad. thank you so much. Thank you so much for Thank you, sharing that story with us. big fan, big fan, big fan. I Thank you, hope Prajwal. the juice wala and your friend are both fine now. I was just Yes yes, thinking, he is what is completely the fine, And but juice वो वाले का इंसिडेंट फैमिली जो है में? वो अभी तक यहाँ से नहीं गया नो है बट इमेजिन, अभी। जूस वाले का फैमिली में सबका नॉर्मल वॉइस यही होगा, बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? shut up, Suresh. Losing your mind. नहीं लेकिन बट वो बाद में वो किधर गया तुरंत, है ना। वो Okay. भाग गया, वे मैं वो बोल हम रहा हूँ लोग ना। डिस्कस करेंगे अभी. Okay. Thank you so much, Prajwal. Thank you. बाय प्रज्वल। Wild scene. सुरेश कितना खींच रहा है भाई. लेकिन इज इट पॉसिबल दैट गाय वाज फेल्ट बैड कि यार मेरा आवाज सुन के सब लोग बेहोश हो रहे हैं, भाग गया उधर से? But why I mean he was very chill and chilled out with the situation. So why did he get scared with like a bit of a scary voice? That's funny. He fainted. But anyway, no. So I'm guessing now if everything is like straight up, I'm guessing maybe the juice wala ran to get help also. या
एंड ही came back, and he came back से पैसे भी नहीं दिए, 25 रुपए और नहीं नहीं. So now next week the juice wala will call us and say कि कुछ लोग आए थे मेरा मेरे ठेले के अरे पास स्कैम और वो स्कैम गिर ड्रीम गया ऐसे. और जब मैं वापस आया कोई नहीं था. Yeah. He'll think that ghost came to his juice का ठेला. Oh, and he was there. I think he'll come on the scam stream. Yeah, very interesting. So far, we're not getting very far, but please don't go to any juice walas and all. Juicy Lipa, what kind of comments are these? Don't go to the Tela wala in the middle of the night, especially if you're next to a graveyard and all. Like he said, then you'll freak yourself out and pass out. Very interesting, creepy story so far. Let's see who's. Oh my gosh! Wow, this looks interesting. Someone says Samundar wala bhoot. I like the idea of Samundar wala bhoot. As if the sea is not scary enough. You know what I mean? Uske upar se, then you have to deal with a ghost also at sea. That's too much. Yeah, that's too Arey. much of scary stuff. Best of luck to under 19 team. They're chasing 189 against England, the final of the under 19 World Cup. Thank you, Neeraj, for that update. Yeah, I mean, where And- else could we put that? In a Uh-huh. ghost story stream. अच्छा, समुंदर वाला cricket भूत updates. वो अभी भी समुंदर में ही है. Let's see. I don't think Samundar Bala Boot is making it. Scared to click some of these. Alright, Suresh, आप ही निकल गए. नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ. No, I clicked the button. Guys, don't forget to go to the description of this video. And man, just this artwork blowing my mind. I've also posted, he posted a little making of his artwork. I've posted that to my YouTube as well. Go to his Instagram and give a bunch of love. Hello, कैसे हैं आप? हाय My मुझे Hi. सिर्फ आप ही दिख रहे हो, सुरेश नहीं दिख रहे. मुझे दिख तो गया. आप ही दिख रहे हो. हाँ अभी दिख, हाँ आप दिख रहे हो. सुरेश, are you playing hide and आ, seek? वापस आओ. मैं इधर ही हूँ. मैं दिख रही हूँ आपको. हाँ, लेकिन बहुत Yeah. मतलब डरावनी टाइप्स. यस. Mood lighting, Ah. ghost. डर. तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा स्टोरी. तो कैसा था? अरे बट शुरू करने से पहले आप पहले तो हमें बताइए, आप ऐसे ही बैठते हैं घर पे? अरे नहीं, मैं गैलरी में खड़ी हूँ. अच्छा, अंदर मेरे अगर को मैं डर लग स्टोरी रहा है. सुनाने बैठूंगी तो फिर अच्छा, ऐसे. ठीक है. सॉलिड माहौल बन रहा है. बेस्ट ऑफ लक मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स. तो कैसा था, मैं जब छोटी थी लाइक 4-5 इयर्स की थी, तो एवरी वेकेशन में मैं जाती थी गांव. तो कैसा था कि पहले बहुत डेवलप नहीं था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी 2-3 घंटे आते थे. तो रात को क्या होता था, समर वेकेशन में बहुत गर्मी होती थी तो बाहर सोते थे सब लोग, सब अपने अपने जो जैसे आंगन टाइप होता था वहाँ पे सोते थे. और ऐसे रो होता था, सब सामने सामने घर होते थे और सब सोते थे. तो मैं भी सोई थी और पता नहीं मुझे नींद नहीं आया, कुछ नहीं आया. एक लेडी आई, मतलब थोड़ी शाइनी शाइनी कपड़े पहनी थी एंड नॉर्मली थी, जैसे तेलंगाना में कैसे एक चोटी बांधते हैं नॉर्मली और साड़ी पहनते, ऐसे साड़ी पहन के वो सामने वालों के घर पे गई और जाके, और मेरे तभी एक्चुअली भूत या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दुनिया में था ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वो गई सामने वालों के घर पे रात को, पता नहीं मुझे वो भी कितने बजे गई. फिर से वो आई मेरे बाजू में, मेरी एक वाया आंट सोई थी, उनका हाथ पकड़ी और निकाली, उनको देखी थोड़ी देर, देख के फिर बंद की, फिर चली गई. और मैं उनको देख रही हूँ बट वो मुझे नहीं देखे और मुझे कुछ पता ही नहीं. फिर सुबह उठने के बाद कुछ 5-6 बजे ऐसे, मतलब 6 बजे 7 बजे सब उठते हैं. फिर बाद में मेरी आंट बोल रही थी आज भी वो आके गई, मुझे देख रही थी, मैं सोने का नाटक की, अब मैं क्या करूँ ऐसे करके. और मेरी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो क्या है, कौन है. और मैं अभी मैं 25 की हूँ, लाइक 20 इयर्स 19 इयर्स हुआ है वो सीन. ओके, मुझे अभी भी वो आंखों में है कि वो कैसे गई, कैसे आई, और मेरी लाइक बुआ को कैसे देख रही थी वो, लिटरली मुझे अभी भी वो आंखों में है. फिर मैं सुबह, वो लोग बात कर रहे थे ऐसे वैसे, वो मेरी दादी मुंबई की है, मतलब उनको नया लगा. दे वर सो कॉमन अबाउट इट, मतलब इतना उनको कॉमन था वो चीज. उनको टेंशन ही नहीं था, मतलब उनको नॉर्मल लग रहा था ये सब.
हाँ, और फिर मेरी दादी फिर उनको पूछी क्या क्या कैसे कैसे, तो सामने मतलब जो उसका हस्बैंड था वो किधर और उसका अफेयर था, तो ये जल के मर गई थी। तो वो शादी कर लिया फिर 1-2 महीने के अंदर, फिर वो रोज आती है ऐसा कुछ तो। Oh my God, I got goosebumps. Oh my God. तो आपने उनको देखा है? एक मिनट, एक मैंने मिनट. मुझे आपने उनको अभी, देखी? अरे मैं बोल रही हूँ मुझे अभी भी पता है, वो वो जो सीन होता है जैसे वो उसके घर पे गई फिर हमारे यहाँ पे आई, मुझे My अभी God. भी आंखों में है। फिर बाद में मुझे, मैं किसी को बता ही नहीं, मैं देख रही थी करके, मुझे बहुत बुखार हुआ, फिर मेरी दादी बहुत डर Fever. गई, इसको बुखार बुखार हो गया, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से इसको लेके आई यहाँ पे। फिर 2-3 दिन हॉस्पिटल वगैरह घूमे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक ने बोला कि मंदिर जाओ, शायद यहाँ का कुछ हवा वगैरह लग गया होगा। तो फिर मंदिर गए, तो फिर मंदिर जैसे गए ना ठीक हो गई मैं, फिर खेलना वेलना सब चालू हो गया मेरा। Oh, wow. Man, that was very like बहुत ही creepy लगा मेरे को. मतलब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने क्या देखा? लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, एक औरत थी और उसने ना कुछ शाइनी कपड़े पहने थे, जैसे आपको पता है साउथ इंडिया में ऐसे वो जो पल्लू है ऐसे बांधते कमर में ऐसे बट खोचते हैं फेस समथिंग। फेस आपने देखा उनका? मैं फेस नहीं देख पाई, और उनके बाल मैं देखी, उनके बाल ना कुछ नीज तक थे, वो भी छोटी बांधा हुआ। मुझे लिटरली पता है वो चीज कैसी थी, तो My ऐसे ही gosh. हुआ। तो बाप रे. स्पेसिफिकली आपके आंटी के पास? हाँ स्पेसिफिकली, और मेरी आंटी तभी यंग थी, लाइक अर्ली 30s और लेट 20s में थी वो, ऐसे। मैं तो डर गई सुन के ये सब. बट थैंक यू मैम. Yeah. आई होप इस स्ट्रीम का अभी बोनी हो गया है। आपने बचा अरे लिया अपना स्ट्रीम को बेसिकली. हम अपनी हाँ, दफनाने वाले थे स्ट्रीम को, बट अरे आपने एक्चुअली बचा क्या लिया. हुआ था, मैं ना 2 हफ्ते पहले से ही देखना स्टार्ट की, और मैं ओह, बोली ये वाला मेरा बताऊंगी ही कैसे भी। मुझे एक्चुअली साइरस से भी बात करना था बट वो आए नहीं कैसे। कितना बदमाश है ना, जब भी उनसे बात करना है तो वो आता नहीं है. साला नहीं, काम चोर. हमेशा ही बात करना होता है लेकिन वो बहुत रेयर आते हैं। यही है. और सुरेश जी को भी मैंने मैसेज किया था कब है स्ट्रीम, तो उन्होंने बोला कि इस वीक तो रहेगा कैसे भी। स्वाति जी, और माय सुरेश जी गॉड, बहुत 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 स्वीट है सुरेश जी। आपको थैंक पता यू। भी नहीं है ये कितना स्वीट है. स्वीट से भी ज्यादा स्वीट है, और विस्कस नहीं भी. नहीं, आप कितना रोस्ट करते हो, आप साइरस सिरिल कितना रोस्ट करते हो, बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, सिर्फ नहीं स्माइल नहीं, करते मैं रहते रोस्ट हैं। नहीं करता, मैं सीधा मैं फ्राइंग करता है और बेकिंग करता देखो है ऐसे प्लीज. हंसते रहते हैं। सुरेश लाइव रिव्यू. एनीवे, थैंक यू सो मच स्वाति. थैंक यू। हाँ, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय बाय. वाओ, दैट वाज रियली क्रीपी सुरेश. या व्हाट आर द ऑड्स? आज भी वो आई हमको देखने के लिए. Oh my God, what? It's like and it's become a daily thing? Bro, that's क्वाइट too पॉसिबल, creepy. यू नो, क्वाइट अभी पॉसिबल। सुरेश ही मत करना. नाउ यू हैव टू आई एम एक्सेप्टिंग भाई। अपना रंग दिखाना पड़ेगा आपको. हाँ, तुम ऐसा रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं ए होना चाहिए बात आपके करने दे। साथ. Get really aggressive and go crazy. बात करना, बात करना. Very funny. But that was actually we had a lot of fun through that story. But if something like that happened, Suresh, oh my God, I wouldn't be able to sleep in that area again. What is या going on? मैन, दैट एरिया आई एम वंडरिंग व्हाट विल हैपन टुनाइट। It's always the oldies who are like, हाँ हाँ वो आती है रहती है, वो उनको थोड़ा उनके लिए दूध रख देना बाहर, वो ले जाएगी, कोई नहीं. नॉर्मल, क्या एकदम भूत? नॉर्मल। एकदम normal उनके लिए. Wow, guys, don't forget to hit like if you haven't already. Hit like on the stream, it'll really help. Also very important, you know what to do. Go over to the description of this video, find Suresh Menon's Instagram. Jaake just keep on clicking that follow button. You want that music? Yeah. Oh no. Oh. Anybody who tunes in at that point of the stream is like, what the hell are we watching? I thought we were coming up for ghost stories. Oh my God, before we go to the next story. मैं बीच में आई थी वो स्टोरी के बीच में.
मेरी बिरादरी के वो मेरी तरह वो बात कर रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा. शिवेश इज यू गाइस, मे द स्पूक्स बी विथ यू, कीप रॉकिंग गाइस. ये थैंक यू शिवेश, कितना स्वीट. सुशांत सेज थैंक यू फॉर कमिंग बैक. हम लोग किधर गए ही नहीं थे, हम लोग घर पे ही थे, सिर्फ वो बटन नहीं दबाया लाइव स्ट्रीम का. और कौन है? आई टुक अ पिक्चर माय फिंगर बाय मिस्टेक. दीपांकर पराशर सेज नथिंग, जस्ट सेंड अस मनी. थैंक यू दीपांकर, सो स्वीट. मुरली से सुरेश सर के लिए पॉपकॉर्न का जुगाड़, ये हो चुका है, ये वाला हो चुका है. विल मूव ऑन. सो ओके, दैट वाज द फर्स्ट fairly creepy story of today's stream. Let's move on to our next ghost storyteller. Where is Sau? Sau is currently having his dinner. After that, he is required to massage all the guests. So, so once that is done, maybe he will join us. I'm finally going to find some use of the stream deck because I do need to have the buttons on here for the scenes. मैं करेगा. Takes a moment to go between mouse. Then you can see us in करे शशांक जी, आपका स्वागत इस अद्भुत स्ट्रीम में. अरे वो कल का सीन है. Did you guys enjoy yesterday's अद्भुत things? Please let us know in the comments of that video. इधर नहीं, मैं ऐसे तुमको क्रॉस प्रमोशन आपको रिमाइंड करने के लिए. Like I said, don't forget to hit like on good streams, good content that you enjoy, and if possible, when you have some time on this stream also. क्या हुआ शशांक? नहीं पकड़ रहे लाइन. It's like fishing, but नहीं होते ही. वो है ही नहीं. Let's see what we got. I'll keep taking more calls. Rogue mentioned that Suresh was listening to the story and putting popcorn in his mouth with fear. Fear eating. How? Imagine something fearful is happening and you're eating. How do you do that? ठीक है शशांक. शशांक is out. उनका ऑडियो नहीं चल रहा है. लिखते हैं. Let's see who's next. Man, I was actually. Sorry, I pressed the wrong button. I was enjoying not doing ghost stories, Suresh, because I mean it was seeping into the dreams and all. I started dreaming about stuff, and then you end up thinking about all these things. It's not fun. I dreamt that you. क्या क्रोमा की है? The blur effect. Hey guys, can you hear me? You can hear you. Can you hear us? I can. कौन चिल्ला रहे? I need to just pause the stream. Take your time, sir. Great. Pause. So everybody pause. It was my first time to join the stream. And it happened is what I wish I could say, but I've been trying from 1 year. So thank you. I'm so sorry. And then there are people who come every week and उनका number हर हफ्ते लग जाता है. Exactly. It's no, but thank you. Namaskaram मेनन सारे. മലയാളിയാണോ? അതെ മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണോ ഇത് കേട്ടിട്ട്? അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ. No, for whose sake? Okay. So because nowadays Malayalam content is doing very well. And did you see Bhutakalam? Not yet. Should I? You should. But I'll tell you if you should after you tell me a story. Okay, perfect. Thanks a lot. So thank you for having me. Big fan of both of you. So it's a short story, but it's a story of my friend. Small fan. Okay. Sorry, small. Oh. Please continue. I thought it was going Shaktiman. I don't know. Yeah. But so it's a story of a friend of mine, her mother, basically. So during these vacations, you go home, like go to the villages for for studies, and just take a small vacation with your family. So she went to her aunt's place somewhere around in Karnataka. I don't know where. But so for 2 months or so, she went to just be with the family there. So she was with a grandmother, her aunt, and in this house where she was living. So normally during the evening, she used to study pretty late. Okay, so her grandmom used to sleep early. So she used to sleep on the bed over there in one corner of the room, and the other corner of the room she used to be sleeping. And they have this mosquito net, right? So a little bit of a backstory. And once what happened was that during the daytime, she was alone at home and she heard someone calling her name, a female voice. And she went to the front room and she opened the door. She nobody's there, but it was pretty clear.
And then this thing happened once or twice, but then one night she was studying late and she was just about to go to bed. And so the mosquito net is tied up, right? So you basically lift the mosquito net to go Go in. inside, yeah. And in the corner of the bed, there is a small baby. And it's like a baby ghost, and it's like a very small baby, the one which you catch in your hand, kind of like a year old, that doesn't crawl around. It's just there. It's just sitting there in the corner, and she's like, what to do? And she's pretty young at the time. I think she was like about 10 or 11 years old or something around that age, and she was not in the situation of like how we would react to it, but she kind of like climbed around the side and she just sat in the bed with the net enclosed and with the baby in the corner for the whole night basically. And next day she even told her aunt about it, and her aunt was like, just get lost, don't tell all lies, because that's the first reaction of every elder. Shut up and go to And sleep, Hoezaay. Yeah. yeah, yeah, and the shittiest part of the whole story is that she kind of experienced this kid every couple of days or something, and she had to just live with it in that situation. And Oh, yeah, God. because nobody is ready to listen to her. And yeah, it's so creepy to just have somebody sitting in the corner of your bed. But the good thing is that the kid was not like doing something, and it just was there. It's apparently said that in that house before, a mother and a child had died or something like that had happened. So yeah, Shit. that's the story. Wow. This is right up there with if you're in an empty room and you hear a fart sound. And is it funny or is it scary? I mean, what? And nobody believe. Yeah. And this just She happening. left the house, then yeah, it kept happening with her, and she didn't know what to do, so she just used to kind of sleep in the corner, and then sometimes the baby used to be there. And this sometimes eventually not. stopped. Did the baby grow up, go to school? What happened? No, she left, right? She left back to her home. So it Oh was for a my couple of months she was God. there. But yeah, once actually a priest Gulp, also had come gulp. and told that something is fishy in this house. But yeah, I mean, adults are very weird in that Skeptical. sense. That's the problem. Skeptical. Yeah. So I think you Wild. must watch Bhutakaham. Okay, I've got your validation. But sir, I'm so wondering at some point they must have said, okay, chalo, I'll sit with you. Where's the baby? Nahi dikh raha or something. So was it only she was seeing the baby, or were other apparently people just experiencing? so. I mean, it's in the middle of the night and randomly. So even if, I don't think she went and woke somebody up. But her grandmother used to sleep over there. But I think that gave her a sense of safety, maybe. That to just Oh, be in a place like, yeah. But it was pretty. I don't know if I can survive that. मैं तो पहला वो हम तो फकीर आदमी है, जल्दी दूल्हा लेके चले जाएंगे, सबसे नहीं पहले तो कट जाएंगे, मैं तो झोला भी छोड़ देता है. तब छोड़ के Anyway, मैं जाओ. तो सोच रहा हूँ that child was so scared कि उस वक्त बेड के ऊपर चढ़ के किसी और को नहीं बुलाया, डिस्टर्ब नहीं किया. That means इतने strict थे वहाँ के लोग, हो सकते हैं, yeah, that's है also ना? possible. Yeah, so I नहीं mean, तो if you tell, anybody else would have spooked, and she was not scared of the baby ghost, I but love she was that scared Suresh of as a parent always gets into that. Are the parents listening? Are they listening? Yeah. Are they listening? What's happening? That's pretty cool. Anyway, so thank you for a highly unnerving story. Cyrus would have said that. Oof, Thank you so much creepy, for having very me. creepy. Thank you, buddy. Definitely Thank you. goosebumps. This is the first Goosebumps. person who wrote something in their description in Zoom, or actually ho gaya. Nice. Okay, I, buddy. before at one point, just to get in, I used to try like maybe put chicks' names, because Hoezaay was getting in a lot of girls on Oh, screen. So I was yeah. trying changing girl, but it doesn't work. So It doesn't work. I'll have to Actually explain doesn't. this to my wife now. Thanks for saying that on the stream. Thank you. so nice to meet you all. Chal, And bye. he's quickly running off for the bye. Anyway, it's proof that I don't do that. He's saying Yeah. he didn't make it through. How silly. You put in girls' names thinking I'll let you in. Funny. Very funny. Wow, Baap re. Suresh, that was mad creepy. Because I mean, there have been those stories of you hear a baby crying and all in the house, but koi bacha nahi hai. Seriously, man. Fuck. No, thank you. Nahi chahiye. Hello. Nahi chahiye. Okay. We can do this. You feeling okay, Suresh? Yeah. You getting through this? I think so. Alright. This is a long stream or the 1 hour stream? We can stop whenever you want. If you want, we can stop right now. Chat, what do you Oh. think? Should we stop this instant? Oh my God.
It's Ram Gopal Verma. Yeah. He's like, ये देखो shot वो मेरा पैर के नीचे से moving shot. Anyway, Delhi Horror Story decided not to tell us their horror story. उसका, oh my god, no, not another one, yeah. One graveyard story. Ooh, darky. Let's see what happens. They bring them in. Inside scheme पकड़ लिया बंदे ने. Yeah, but उसका scheme outside हो गया because नहीं चला. Let's keep going. Who's next? What did I click? I don't even know what I click. I mean, what did that person click? Graveyard hey, story. ठीक से click कर. नहीं वो है कोई इधर. मैं नहीं कर रहा ये सब. Please try to tell us your stories in. फ्रेम में तो कभी ऊपर Hello? नीचे जा रहा है when you're getting the. Yes, sir. हाँ Thank अच्छा you. एडजस्ट के आपने- लिए. ओके ओके समझ गया. Hello? अभी समझ- What do you think मैं काम कर रहा था से? Hello. कौन Yeah, है? can you hear me? We can hear you. Can you hear us? Yeah, 1 second, just I'll switch off my Bluetooth. मैं तो नहीं से switch off my geyser. उसको on रख दिया. No, 1 second, just give me. No problem. Take your time. हम लोग वैसे भी क्या कर रहे हैं सब लोग? आप लोग कुछ कर रहे? नहीं ना? Just relax. तरुण ने मैसेज हाय देखो मैं कैसा आया वैम्पायर की तरह. You don't understand how much work goes into this nonsense. I had to dress up in Respect, the house sir. and do all this semi green screen shooting and all. क्या लगता है? Wow, सुरेश आप दिल्ली से बोल रहे हैं? आपका कैमरा को ठंड लग गया. नहीं that's fog inside the house. No, I'll explain that later. अरे Oh, यार geyser. लैपटॉप को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए This भाई. this you are using my old laptop. This is a hack for an online exam, by the way. Oh really? What do you mean? Yeah. What kind Like of if you are giving an exam, then that I have put a sellotape on it so that they are not able to like notice my eyeball movements. Oh. And you couldn't just, why would you say that on live stream firstly? I don't think my examiners are watching this. Don't be you sure. never know, bro. Never know, bro. और he's अभी रात को इसका मैसेज आएगा. नहीं सी दैट्स मेरा लेवल ये है कि इज कॉन्फिडेंट कि हो जाए. ज्यादा लोग नहीं दिखता है. टेंशन मत बट ब्रो बट कैन आई जस्ट से वी कैन सी योर आईबॉल मूवमेंट्स. Yeah, very clearly by the way, for your kind information. But yeah, I think on Zoom they might be able to see, but not on the platform which I'm giving the exam. अच्छा Most of us okay. are fast like this only. तो ठीक है. Oh, You get to excellent. learn something new every day. Okay then. Yeah. ठीक है. So Is it a ghost story or it's a scam story? No, it's a ghost story. Ghost Okay, story. just checking. Wow. Yeah. So Alright. this is about I think 2014 or 2015. I was in my 10th class. So in Hindi English मिला के बोल रहा हूँ कोई. अरे कोई जो भी problem नहीं. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो प्लीज हिंदी में ही बोल दीजिएगा पूरा. मैं अब भी आया. हाँ. So तो एक्चुअली क्या हुआ कि 10th क्लास का हमारा एनुअल फंक्शन होता था. तो वो हमारे स्कूल में होता था. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन लिटिल अबाउट माय स्कूल की जो स्कूल का मेन कंपाउंड है दैट्स इनसाइड अ बिग कोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. लाइक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है. उसके अंदर स्कूल सिचुएटेड है. सो उसके स्कूल के चारों तरफ ऐसे कॉलोनीज थे बहुत सारे छोटे छोटे. एंड देयर वाज इवन अ ग्रेवयार्ड देयर. सो अब सीन यहाँ पे ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता था वो 10:30 11 तक चलता था. और हम लोग निठल्ले लोग सब दोस्त लोग मिलके हम लोग बाहर जाते थे एंड वो कॉम्प्लेक्स में घूमते थे. घूमते घूमते अब रात का टाइम है तो सब लोग सोचते हैं कि चलो ग्रेवयार्ड में जाके भूत का स्टोरी बोला जाए या फिर जाते जाते भूत का स्टोरी हो जाए. एक बार ग्रेवयार्ड से जाते हैं एंड वी वर ऑन आवर साइकिल्स. दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो सब लोग ग्रेवयार्ड से. अब ये 10th के बच्चे गधे दिमाग है नहीं. सब ट्राई कर रहे हैं स्मार्ट बनने का. तो हम लोग ग्रेवयार्ड के थ्रू जा रहे हैं. अब नाउ इट स्टार्ट्स गेटिंग इवन लाइक स्केरियर बिकॉज सबके दिमाग में भूत के स्टोरीज भूत के एक्सपीरियंसेस जो पुराने उन्होंने सुने हैं हुए हैं उनके साथ वो चल रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम that's a Christian graveyard. My school was a Christian missionary school, so there was a Christian graveyard. Like the graveyard was there, so crosses were there. While they like dafna were crosses like that. And on with your peripheral vision, it looks like a man standing there. So सबको डर लग रहा है and this type of these things are happening. तो वहां जाके थोड़ी देर रुकने का प्लान हुआ. थोड़ी देर रुके थे हम लोग. भूत का स्टोरी सुनते सुनते कुछ लोगों को डर लग गया एंड वी सेड लाइक वी नीड टू लीव. वी कांट स्टे हियर.
we started peddling. All of us started peddling, and there was what the क्या था पता है कि जो यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों साइड ग्रेव्स हैं, बीच में एक पतला रास्ता टाइप का जिसके थ्रू विल गो like people walk and all, so you can pedal also through that, like cycle also through that. So अब pedal करते करते one of my friends इसका चेंज होता है साइकिल का, जिससे like you can pedal, that falls off, like it loosens basically. So now अब जब वो बोलता है, सब लोग बोलते हैं कि भाई हम नहीं रुक सकते तुम्हारे साथ, हम निकल रहे. He starts fixing his chain there. मेरा क्या हुआ कि while I was just about to leave, like गेट मेरे सामने है ग्रेवयार्ड का, and my chain also falls off. मैं बैठ के अपना, and now मेरे को डर लग रहा है, but चेन ठीक करना important also, because if I get on the cycle I'll leave easier, faster, right? So मैं चेन ठीक करने बैठा हूँ, and I'm on my knees with in front of my cycle. Right side में मेरा दोस्त आ रहा है, मेरे को दिख रहा है. He is coming, like he has fixed his chain and he's coming. So मैं सोचा हाँ जब तक वो आ जाएगा तब तक मैं ठीक कर लूंगा, and I'm like doing this like this, I'm like fixing my chain, and एकदम बगल में आ गया मेरे. तो मेरे को एक आवाज आया कि रियान चल, like my name is रियान, रियान चल. तो मैं ऐसे घूमा, तो इधर देख रहा हूँ कोई नहीं है. फिर से बोल रहा है क्या हुआ, किधर देख रहा है, तो घूम के देखा यहाँ खड़ा है वो, like near the gate. मैं उस टाइम पे आई डिडंट like question, I said chain fixed है, नहीं है, दिक्कत नहीं है, I'll push my cycle and run away from there. साइकिल लेके निकल गया. He also didn't ask me anything, I also didn't ask him anything. A few weeks later, after annual program, we get our Christmas holidays. So Christmas holidays में सब वापस मिले, not in the graveyard, separately कहीं और, and everybody like was discussing about this कि ऐसा ऐसा हुआ है करके. He said कि यार why did you look the other side when I asked you this? So that person is saying कि मैं तो डर गया था, इसीलिए मैं चला के पहले भाग गया. I didn't even fix my cycle. तो मैं बोला कि same, but I thought you were coming from this side. And he said no, I didn't even see you that your cycle, तेरा साइकिल का भी चेन गिरा है या फिर लूज हुआ है, ये मेरे को भी नहीं पता. I didn't even see you while passing by. And the same, I didn't see you leaving. So how did you end up outside and I was inside? Because technically देखा जाए वो अंदर में था, and he should have crossed me before exiting. Shit. And all of this happened, and we discussed among our like peers and all. ऐसे पता चला है कि और बहुत लोग ऐसा ये इस ग्रेवयार्ड में ऐसे हो चुका है, सिमेट्री में ऐसे हो चुका है. एक अंकल थे who was like the cemetery is like बीच में एक stretch of land है जहाँ पे cemetery है, and right side में complex like रहने का जगह, left side में रहने का जगह है. So sometimes क्या होता है, shortcut के लिए लोग cemetery के through इस तरफ आ जाते हैं. तो बहुत बार क्या होता है कि वहां से लोग आ रहे होते. एक अंकल क्या था कि वो उनको लेट नाइट ट्रेन चढ़ना था, तो he walked, उसको बस मिलता है इस तरफ से, तो he walked through that thing only. And he was a like skeptic. उसको डर नहीं है, भगवान का भी डर नहीं है, भूत का भी नहीं है. So he used to walk through that. So he was walking, उसके फोन पे था वो. And जब वो फोन पे था, कॉल पे उसको वो बात किए जा रहा है. He thought that someone's beside him. तो by the time he reached the end of the like वो जब गेट पे पहुंचा, everything like people he thought that फोन कट गया. एंड वो सोचा कि बगल वाला बंदा कहाँ गया. तो वो ऐसे घूमा तो देखा कि एक ब्लैक शैडो गया, बट हु वाज इट, व्हाट वाज इट, ही कुडंट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट. Woo! तो डर गई थोड़ा time, like people are saying. So Suresh, I'll let you do the parallel dimension theory as soon as you want to, but some people are saying you'll have moved through space and time in that graveyard. Yeah, I think so. Maybe so. Now let me one second. So where is this place? This is in West Bengal, Dankuni, one place. So it could be a portal that had opened up that day. देखा फिर और क्या हो सकता है? Simple. तो उधर जाएंगे तो if you want to travel in space वहीं से जाना पड़ेगा. But the thing is, उसके बाद we have been like, now I'm in my masters, but You've been there again? I've been there again, not in the night. Like उसके बाद से there hasn't been a chance to go in the night all ऐसे. And you're looking forward for a chance. Yeah, if at all if I get, I'll try once more. But but दिन में कुछ नहीं हुआ आज तक वहाँ पे.
That's crazy, bro. Next अगली बार जाओगे तो ये टेप जो आपके लैपटॉप है वो ऐसे डाल के ऐसे डाल के जाना. All right, buddy. Thank you so much for sharing thank you, Jose. many things with us today. Yeah. Thanks a lot. Bye, buddy. Bye. Wow. I Very had no interesting. idea that was a hack for exams. No, but that didn't make any sense. His eyes were very clear. Any camera, he thinks that the software that his school or college must be using Yeah, is please, operating the camera. Sir, please, I'll have to sit and edit this, and I might have to blur his face also. I don't know. We'll figure it out. No, that he deserves it. He shouldn't have said it. Just shut up. Nobody deserves anything. Anyway, we'll keep going. Thank you guys. Fairly so far. This was that the previous story was pretty creepy, I thought. This one was also in that creepy realm. My God, Quite creepy. Quite friends in the graveyard. Audio is coming from somewhere else. उनको audio का issues हो रहा था उधर सुरेश graveyard में. Hey, maybe it's not a soundproof. Well, the sound acoustics are not good in such places. कोई और था. नहीं हो सकता है कहीं से बाउंस होके आ रहा होगा वहाँ पे. Sound is bouncing. अरे Yeah. कौन है? Because एक energy को meet करते when you are hearing in the past, right? So when you throw something, that energy of the sound from your mouth, and there is some other form standing in front of you, तो उसको लग के deflect होके दूसरी side से आएगा. हाँ. ऐसा. Welcome to his TED talk. The sound deflected, went to another dimension and then Yeah. came back. तुम लोग हंसो ऐसा. तू Watching हंस too रहा है ना? much Star Trek, Suresh. आज रात को मैं आऊँगा. Talk nonsense. It was a good story. Guys, you please feel free to leave your rankings on what do you think of Suresh's hair, whether you think I need someone said Hoezaay आप भी बाल काटो, whether you think the story is good, totally up to you. Also meanwhile subscribe, like the stream, दूसरे लोगों को बता दीजिए, tell people in your building also कि अरे ऐसा ऐसा होता है, ये पागल लोग बैठ के सुनते हैं stories. School hostel story. Hello, how are you? कैसा है सर? सुर दो. Yes, now You are little bit. अरे he's like मैं फेंक देगा ये हेडफोन्स में फेंक देगा, मजा नहीं आ रहा है. सर आपका नेटवर्क का थोड़ा यू आर ऑडिबल सर, आपका नेटवर्क का थोड़ा गड़बड़ है, बता दीजिए सर. थैंक यू निशांत. You and me, you understand me. Divya, how can you say something like that? My God, I'm not into all that. I come from a very conservative family. Should I start? Yes. Hello. Yeah, hello. हाँ जी बोलिए. So this happened when hello. हाँ hello. Yes. कैसे हैं आप So सर? this happened when I was in 9th or 10th standard, 2009 की बात है. Okay. So I was मैं मतलब हॉस्टल में गया था पहली बार. So वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम हॉस्टल गया था, तो जैसे हॉस्टल में होता है ना, लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे भूत है, यहाँ वो है, ऐसी स्टोरी मतलब हॉस्टल में चलती पहुंचते रहती ही है लोग आ ना. जाते बोलते कि अरे इधर भूत है ना. फिर तो वहाँ पर भी ऐसा ही था, बट मतलब मैं तब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को मतलब इतना थोड़ा लगा कि थोड़ा मतलब डर लगता था वहाँ पे. तो लेकिन वहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस हुए थे मेरे साथ, वो मैं बता रहा हूँ. तो क्या था कि अब 3-4 बताऊंगा, मे बी बहुत स्कैरी ना लगे, बट कई बार हुआ रात में जैसे मैं सो रहा हूँ, तो यू नो सर थोड़ा जल्दी बताइए. 7 मिनट है आपके पास. 3 अगर बता रहे तो थोड़ा जल्दी कीजिए. I'll only take 2 minutes. ठीक है. So like you know, if you are like lying on your bed, you get a feeling if someone is walking on it. Like you won't see anything. I didn't used to see anything, but बहुत बार ऐसा सेंसेशन हुआ कि कोई चल रहा है गद्दे पे. ये हॉस्टल में? मतलब हाँ मतलब अब मैं उठ गया, जैसे कि मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है करके. फिर लाइक इट यूज्ड टू स्टॉप, तो मैं इग्नोर करता था कई बार, तो बट ये मेरे साथ कई बार हुआ. फिर मैं मतलब कि कुछ लोगों से बात किया, तो वो लोग भी रिकॉल करते थे ये चीज कि हाँ ऐसा कभी-कभी हमको भी लगता है यहाँ पर कि होता है. In the one like I was sitting on my bed, my roommate told me that should I switch off the lights, like it was night time.
So I said okay. So he went across the room to switch off the lights. So what happened was, like, the instant he switched off the lights, like, between me and him, I saw a shadowy figure just walking across the room. Oh, Okay. I got So goosebumps this whole thing. मतलब तब भी मेरे को ना बिल्कुल ऐसा लगा कि वहम होगा मन का ऐसा, और तभी मेरे दोस्त ने लाइट ऑन किया तुरंत और बोला ऋषभ तूने को देखा क्या? मतलब उसने भी देखा था, मतलब मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता था उस चीज Shit. को। Oh shit. He said क्या तूने भी देखा? Fuck. Oh God. Oh God. एंड मतलब ऐसा नहीं था कि कोई परछाई परछाई हो, क्योंकि इट वाज अ सॉलिड फिगर बिटवीन, इट हैपेंड बिटवीन मी एंड हिम, लाइक दीवार पे नहीं था वो शेडो, तो ऐसा Oh नहीं my कि लाइट God. आ That's रहा है damn खिड़की creepy. से या कुछ Shit. ऐसा। तो उसके बाद थोड़ा ज्यादा डर लगना चालू हो गया। सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऊपर जाने वाला है, कोई लाइट नहीं बंद करेगा दिन तक। बाप रे। फिर हम लाइट जलाकर ही सोते थे बहुत टाइम तक। Okay. Sir, please continue. You are giving us हाँ, good तो habubus. एंड एक बार और क्या हुआ था कि अब लाइक यू कैन रिलेट इट टू स्लीप पैरालिसिस आल्सो। आई वाज स्लीपिंग एंड क्या हुआ कि रूम में ऐसा था कि 2 डोर्स वर अपोजिट टू ईच अदर। एक तो मेन एंट्रेंस का डोर था और एक बालकनी का डोर था। यू गेट द पिक्चर राइट? मतलब 2 डोर्स हैं हाँ। अपोजिट टू ईच अदर and the beds are perpendicular, like 3 beds are there. Okay, so I am sleeping on one, और दोनों हम बंद करके सोते थे कि हवा ना आए, हवा से खुल ना जाए करके। एंड लाइक आई वाज स्लीपिंग और अचानक से मतलब मैं उठा एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग स्लीप पैरालिसिस। तो मैं आँख खोल के लेटा रहा कुछ देर। अब अचानक से क्या हुआ कि दरवाजा खुलने की आवाज आई, मेरे को खुली, और एंड आई फेल्ट की रोशनी भी आ रही है बाहर कॉरिडोर से। ठीक है, एंड देन आई heard like steps going from behind my head to the second door, और दरवाजा खुला हुआ था अभी। ओके, एट दैट टाइम आई लाइक woke up, I snapped, I woke up, मतलब उठा मैं, हिलने लगा एंड देखा कि दोनों दरवाजे तो बंद हैं, कुछ भी नहीं है। Oh shit. शायद आपको वो सपना में दिख गया वो। ऐसा हो सकता है, हो बट सकता वट एवर आई लेफ्ट दैट हॉस्टल इन लेस देन 1 ईयर मेरे से तो नहीं रहा जा रहा था वहाँ हाँ, पे, ये ऐसा तो मेरे बहुत साथ। ज्यादा क्रीपी हो और गया ना। एक्चुअली आप मेरे आप साथ अभी अभी पहुंच गए और ये सब हो रहा है आपके साथ। no, so this happened in a span of few months, not like अगले दिन नहीं हो रहा है, but ऐसा मेरे साथ अकेले नहीं था। many people तो कुछ आया हफ्ते भर में ही छोड़ के चला गया कुछ बिना बताए। एंड हाँ, छोड़ के जाने से बताता हूँ, like there used to be 2 wardens in the hostel at a time। एक तो ग्राउंड, मतलब जैसे 2 फ्लोर का हॉस्टल था, ग्राउंड एंड फर्स्ट, तो एक नीचे रहता था, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। so I used to be on first floor। तो ऐसा मतलब मैं 3 इंस्टेंस तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। ऐसा हुआ कि जैसे वार्डन मतलब रात को डिनर के टाइम पर है एंड सब है, सोते टाइम भी वी नो दैट द वार्डन इज देयर अपने रूम में। एंड मॉर्निंग में जैसे सब उठे 6-7 बजे जो भी स्कूल के लिए, तो वार्डन गायब विद हिज लगेज एंड एवरीथिंग। मतलब कुछ बिना मतलब गायब मींस ऐसे नहीं कि मतलब मतलब he was done, वो वो निकल छोड़ गया। दिया, ये निकल गया, वो स्मार्ट he था। was done, छोड़ के चला गया। हाँ, ऐसा Oh 2-3 shit. बार 3 बार तो आई कैन रिकॉल ऐसा हुआ वो है। वार्डन से एंड बात करना नो पड़ेगा। रीजन। He'll तो have all वार्डन the का नंबर info. मिलेगा। अरे अब तो 13-14 साल हो गया। रहने दो सर। शुक्रिया हमारे साथ ये सब अद्भुत चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप जरूर वो मलयालम पिक्चर देखिए, भूत कौन सा? कालम। आपका जो एक्सपीरियंस Okay. बता रहे थे आप इस वक्त, रहने दो। सिमिलर सिमिलर थिंग्स। अरे इट वाज लाइक एक्चुअली फर्स्ट 45 minutes almost slept, then suddenly when it started Got and the crazy. last 15 minutes was actually the scariest part of the film. Other baki you can fast forward till that time, but Anyway, exactly what you Yeah, described just now. I'll man, check it out. I am very sorry to everybody who's watching this from a hostel currently or from a place where you think there are ghosts. I'm very sorry. Thank you, sir. Thank you. Shukriya. Have a good evening. Thank you. बहुत Take बढ़िया, care. बहुत बढ़िया। So, Dargi, having people climb on your bed, but there's nobody there. Put the lights off, and there's someone standing between you and your friend. Great, great. ये सब सपना में आएगा बाद में। अभी क्या करें? We chose this life, Suresh, right? We chose Yeah, to do this. correct. But now we can stop. We can. I think we'll do another 20 minutes more, Suresh. Of course, sir. You said you want to go to the bathroom ना, वो दर्द हो रहा था. No? कोम करने आता।
What? What the hell? What the hell kind of? You आधा किसने पादा? Oh my god! It looks like इंचुलर है. it looks like he's about to go and bowl a ball like that. So, can you hear me, guys? Yes, we can hear you, sir. Yes, how you? Ah, Sorry, I'm a bit camera shy, so I'll tell this story. Don't worry, sir. Don't worry. Okay, this happened recently. Am I audible? Yes, sir. You're very audible. loud and clear, sir. Okay, I'll talk and I'll narrate this story in Hindi. Is that okay? Please, 100% मजा fine, आएगा sir. सर, मजा आएगा, हाँ. फील आएगा. सर ये स्टोरी हुआ था मैंगलोर में 26 दिसंबर को. मैं और मेरी वाइफ मैंगलोर गए थे मेरे रिलेटिव के साथ क्रिसमस मनाने के लिए. तो हम लोग बचपे एयरपोर्ट उतरे और वहां से प्रीपेड सर्विस बचपे टू उबर बुक किया हम लोग ने. फिर बाद में हमने प्रीपेड कैब बुक किए, उसमें बैठे चले गए. हम लोग जब जा रहे थे, सो आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव बीन टू मैंगलोर, बट बचपे टू हम्पनकट्टा जो एरिया है थोड़ा हिली एरिया है. आपको थोड़ा जंगल पार करना पड़ता है. 3 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है. काफी आइसोलेटेड एरिया होता है. आई मीन यू वोंट फाइंड एनी ह्यूमन बीइंग देयर. और लाइट जो स्ट्रीट लाइट होता है वो थोड़ा दूर होता है, मतलब एट अ रेगुलर इंटरवल. समझ गया सर. सो हम जा रहे थे और मैं, मेरी वाइफ और कैब ड्राइवर, ठीक है. तभी अचानक से ब्लैक वैगनर हमारे पीछे थी, राइट टेल एंड पे थी वैगनर. और वहां पे बहुत शार्प टर्न्स है बिकॉज वो थोड़ा हिल एरिया है, तो बहुत शार्प टर्न्स आते हैं. तो हमने इग्नोर कर दिया कि ड्राइवर बोल रहा था कि ये ब्लैक वैगनर जो है इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू आवर कैब. सो मैंने इग्नोर कर दिया उसको. ठीक है चलो कोई बात नहीं. जैसे उन्होंने टर्न लिया, वो ब्लैक वैगनर जो पीछे थी हमारे आगे आ गई. जैसे हमने टर्न लिया तो इट वाज राइट बिहाइंड अस, और जैसे हमने टर्न लिया वो हमारे सामने आ गई. तो ड्राइवर भी थोड़ा टेंशन में आ गया, कहीं ये चोर तो नहीं है या फिर कोई रॉबर्स तो नहीं जो हमें लूटने के लिए ट्राई कर रही है. मेरी वाइफ भी डरी हुई थी, मैं भी थोड़ा पैनिक था. आई वाज आल्सो स्ट्रेस्ड आउट. फिर बाद में थोड़े डिस्टेंस पे जाके जैसे हमने टर्न लिया, वो गाड़ी हमारे सामने से गायब हो गई. रेयर व्यू मिरर से मेरा ड्राइवर देख रहा है कि वो वापस से हमारी गाड़ी, वो जो गाड़ी है सेम वैगनर ब्लैक कलर की, पीछे से फॉलो कर लिया. हमें ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया. मैं उसको पूछा कि अरे ये चल क्या रहा है. तो ड्राइवर ने बोला शायद सर ये कोई लोकलाइट्स होगा जो एरिया अच्छे से जानता है, वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है. फिर नेक्स्ट मोड जब आया तब हमने देखा कि वो गाड़ी जो हमारे पीछे थी आगे आ गई, राइट इन फ्रंट ऑफ अस. ये 2-3 बार ही हुआ. तो मेरी वाइफ भी डर गई. वो ड्राइवर ने बोला पता नहीं क्या चक्कर चालू है. मैंने बोला कि एक काम करो, यू जस्ट पार्क द कार साइडवेज, बाजू में खड़ा करो, मेरे को देखना है कर क्या रहे, ये प्रैंक पुल कर रहे हैं या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जैसे ही वो उन्होंने पार्क कर दिया, मैं बाहर खड़ा था थोड़े टाइम के लिए. जैसे मैं अंदर बैठने गया तो गाड़ी आ गई, उनकी गाड़ी आ गई. मैं बाहर निकल गया और मैं हमारे गाड़ी के बगल में ही उनकी गाड़ी पार्क हुई थी, ब्लैक वैगनर. मैंने उनसे बात किया. 2 बंदे थे, एक लेट 30s में था और एक लेट 30s में जो था जो ड्राइव कर रहा था. उसके बगल में जो बंदा बैठा था वो अर्ली 20s में था. दोनों बहुत पेल दिख रहे थे, एज इफ दे आर नॉट वेल. और सिंस कोरोना का टाइम में मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया. मैं खाली उनको पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आप हमें कभी पीछे से फॉलो कर रहे हो, कभी आप हमारे आगे आते हो. तो वो जो ड्राइवर की बगल सीट में था वो ज्यादा बात नहीं किया. आई मीन ही वाज ऑलमोस्ट सेमी अनकॉन्शियस, लाइक यू नो, थोड़ा होश में था थोड़ा नहीं था. और जो ड्राइवर सीट में था वो भी बहुत इल लग रहा था मुझे. तो उन्होंने बोला सॉरी सर, हमसे गलती हो गया, हम आपको नेक्स्ट टाइम से परेशान नहीं करेंगे. और उन्हें गाड़ी लेके निकल गए. ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई. मैं कैब में बैठा और हम हम्पनकट्टा के लिए निकल रहे थे. तो जो कैब ड्राइवर था रियर व्यू मिरर से मुझे देख रहा था और मेरी वाइफ भी मुझे देख रही थी कॉन्स्टेंटली. तो जैसे ही हम रिलेटिव के पास घर पे पहुंच गए, मैंने मेरी वाइफ को पूछा और ड्राइवर को पूछा कि देख क्यों रहे हो मुझे, मतलब इतना सस्पिशियस. तो ड्राइवर ने मुझे ये पूछा कि सर आप बात किससे कर रहे थे. बोला अरे 2 बंदे थे कार में, एक 30-35 साल का होगा जो ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में एक 25 साल का लड़का था. वो ड्राइवर बोला सर मैंने किसी को नहीं देखा गाड़ी में, गाड़ी खाली थी पूरी, आप किससे बात करते मुझे पता नहीं. मेरी वाइफ भी बोली कि आई डिड नॉट सी एनीवन, मेरे को पता नहीं आप किससे बात कर रहे थे. मैं बोला नहीं भाई था वो आदमी था, मैं बात किया उससे. मैं उसको बोला कि आप निकल जाओ, क्या परेशानी है. लेकिन मेरी वाइफ आज तक मेरे से आर्ग्यू कर रही कि वो गाड़ी में कोई नहीं था
और वो मतलब मेरे को ड्राइवर से तो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जब रिलेटिव से बात किया मेरे मैंगलोर जाके हम्बनघट्टा में कि ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला कि वो जो एरिया, वो जो स्ट्रेच है, वहां पे बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुत लोग अननेचुरल डेथ मरे, सो प्रोबेबली वो एक एनकाउंटर हुआ होगा आपका। लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मेरे को पैरानॉर्मल लगा नहीं, बट जब मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि वो आप जिससे बात कर रहे थे वो था ही नहीं ड्राइवर सीट पे, ना उसके बाजू वाले सीट पे कोई अवेलेबल था, तो आज तक मेरी वाइफ बोलती कि वो गाड़ी में कोई था ही नहीं, यू आर टॉकिंग टू समवन हु डिड नॉट इवन एग्जिस्ट। तो ये तो ओनली यू वर फ्रीकिंग आउट इन द कार, बाकी सब लोग ठीक थे? नहीं, उनको दिख रहा था, वो दोनों को गाड़ी दिख रही थी कि हमारे पीछे है, हमारे आगे। मुझे बट ये लोग नहीं दिख रहे थे? हाँ, लोग नहीं दिख रहे थे उन्हें। मैं जब वहां पे गया, उनको विंडो जो है शील्ड डाउन करना बोला और उनसे बात करना शुरू कर दिया। मेरे को तो दिख रहे थे, जैसे आप और सुरेश दिख रहे वैसे दिख रहे थे, लेकिन मेरी वाइफ और ड्राइवर को कोई नहीं दिख रहा था गाड़ी के अंदर। मेरी वाइफ आज भी बोलती गाड़ी में कोई नहीं था। सब लोग बोल रहे कि रणवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो बियर बाइसेप्स रणवीर, आपको पता है? Anyway, उनके स्ट्रीम पे भी शायद ऐसा एक कुछ स्टोरी आया है। आप ही थे क्या? पता नहीं, क्या क्या होता रहता है दुनिया में। बट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। वाओ, मुझे पता नहीं सर, स्कैरी। थैंक यू सर। मैं तो डर गई काफी डरावनी। या तो मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है सर। हाँ बोलिए सर। मे बी देयर रियली टू शॉर्ट गाइज इन द कार and you could see them because you are standing. No, you could see them because you were standing, and your wife and the driver couldn't see because they were in the sitting position. I know some people. गाड़ी बाजू में थी, बस जस्ट बाजू में थी, और उसके बाद मैं गाड़ी को देखा ही नहीं वो पूरे स्ट्रेच पे। तो अभी at least now we can also safely say that even objects become ghosts. Could be. Correct. मतलब गाड़ी कभी भूत था ना, that means. मतलब मैंने तो ऐसा पैरानॉर्मल थिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरी वाइफ ने बोला कि गाड़ी में कोई भी नहीं था जिससे आप बात कर रहे थे। नहीं, मतलब वो गाड़ी ही भूत था, शायद हो सकता है। गाड़ी भूत। You know, when the driver turned to you and said, आप किससे बात कर रहे थे? You should have, in that moment you should have said, who said that? That would have caused more confusion. Anyway, sir, thank you so much हमसे बातें करने के लिए। काफी स्कैरी था, काफी scary. Thank you. Bye. Yes. Ooh, Suresh, मैं तो डर गई. I was expecting that twist. So many people have heard this story somewhere else also, they're saying. I think a lot of people found that pretty funny. Kौन रणवीर? See, over here कुछ भी हो सकता है ना सुरेश, हमको क्या पता है? हमने बोला कि ये हमारा दरवाजा खुला, आके हमको स्टोरी बताओ। अभी इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतना टेक्नोलॉजी हमने डिप्लॉय किया, वो एंटी बलेज सिस्टम। अभी बराबर एक अच्छा बोला उसने, किसी ने, मारुति cars normally when they are launching a new one, they do this stealth checking on the roads and all that stuff when nobody's there, and they were just stopping, and so they are thinking it's a ghost, and those guys are shit, some people saw us, what if they click photographs? so they hid. Some people are saying Tarzan the Wonder Car and Tesla test driving in India. Oh. And Tesla is actually getting its factory in Bangalore only. That is mad, which is far away from Bangalore, but yeah, we never know. Anyway, I just want to say a big round of applause to all the people in the chat. Thank you everyone who's here watching the stream as we start the new year here in Feb 2022 for me has begun. Thank you for being with me on this journey. Don't forget to go to the description of this video and go to all the Instagram accounts. There's ढेर सारा प्यार दो सब लोगों को, and if you can, please leave a comment, subscribe, like to this channel as well. Somebody asked what headphones are we using. We're using Logitech G733s. Works fine on PC, not really working that well on the PlayStation 5. The headphones work fine, the mic doesn't, it pops in and out. Sorry, I digress. Let's keep going. Suresh, all good? Feeling fine? All good. I was just reading Ranveer ke bare mein. He promotes Khan Masti a number of times at the rate of Hoezaay. Yeah, Ranveer, very sweet. He's messaged me a couple of times and we never ended up getting on his show. So he got fed up. He's like, fuck these guys. I hate them now. I don't want to talk to them. I promised him I'll go on the show. Yeah, that's why he was worried. He was like, nahi. That's why he called you. I say, hey, this guy said, like, he said he's going to be on my show. I don't want him to be. That's a good question, Pankaj. Even I was wanting to ask. Wife and driver were okay with the driverless car. They didn't react to that. They were wondering what the husband was speaking to.
but they didn't bother कि driverless car तो वो लोग डर कोई चिल्लाते नहीं थे डर डर के. Oh, I missed that part also. Maybe there was someone Hmm. driving और वो दूसरे लोगों से बात कर रहा था पीछे. Who Hey. knows? But you know what? While this story was being narrated, I realized that Suresh, in my head, I can't picture a black Wagoner. How many people have black Wagoners? I always see the There Wagoner are in my quite a head few. in that maroon color. Red Yeah. and blue. Black Maybe I've seen. Arvind Kejriwal's Wagoner was black, na? Is it? I don't know. I remember long back. Hello, ma'am. Good evening. Hi, good Hi, evening. Huku. Hi. कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम. आपका स्वागत. क्या आपके साथ I've कुछ been on. पैरानॉर्मल हुआ है? She has been on the stream before. Yeah, right. I was going to Oh. say that. This stream? Yeah, this. No. Before on October. कितना जल्दी बोलते हैं. No. Please मुझे मत दिखा. No, this year is fine. अभी नया 1 मिनट. Beep beep poop poop pop pop reset. Yeah, right. Actually, Suresh sir, I've seen the Bhudakala movie yesterday only, and that's why all these lines are on. Oh shit. And in Kerala, it's actually scary when you see such movies and raat ko. Exactly. and I think this is the first movie I've been scared of in Malayalam. Wow. Yeah. But that's a testament to how scary it is if you feel like keeping your lights on and It stuff. is. It is. The Oh, last 15 shit. minutes. The last 15 minutes is pretty scary. My God. Okay. Anyway, we're ready for your ghost story. Yes. कहाँ से बोल रहे हैं आप? I'm from Kerala only. Welcome to the stream. सुनाइए आप. Okay, so this happened to my uncle. He's living in Delhi, in Mayur Vihar Phase 3. So when he was coming back from his work, his apartment is at second floor. So he was going through the stairs and he saw a lady sitting on the stairs at the bottom of the stairs. So he looked at him and looked at her and recognized her. She is the lady who was living across the street. Like there is another building in which she's staying. So he saw many cars over there, and he asked her, "Why are you sitting here? This is not your place, and why are you sitting here?" So she was like, "No, actually, I'm waiting for my husband. He'll be home, so we have to go somewhere. So I'm waiting for him here." So he got a little freaked out, and okay, then I'm going upstairs. If you want somebody, I can stay here. So she was like, "No, I can stay here. I'll go. I'll wait for him." So actually, the thing was that he was not able to see her face. She was sitting like this. Okay. So he went upstairs and told my aunt that lady who's living across is sitting here. Can you just go and ask her what is the problem? Like, if she need any assistance or not. So my aunt was like, "Which lady?" So he told her the name, and she was like, "You come inside jaldi," and she let him inside fast and closed the door and like did a cross on his forehead. And he was like, "What happened?" So she was like, "She actually passed away this evening." And he was like, "What?" So she was like, "Actually, there was an incident in Delhi in which a lady got killed with her children being at home." Actually, the thing is that a robber came into the home at evening time, and the children, without knowing, let him in. And he immediately grabbed the children and locked them in the bathroom and killed the lady for the money and all. Damn. So he was not aware of this thing, and he saw that lady and talked to her. See, she talked to him back, and he was pretty creeped out by that. And after that, he went to look after for her. And she was not there. Shit. बाप ये रे. बहुत जल्दी आ गया आप पॉइंट पे आए. Wow, that was pretty creepy. Actually, there was another story also which happened in this place also. In Mayur Vihar only. Okay, I'm just kidding. No, are you going to tell us? No, that will take time actually. Ah, good. Little See, bit of time. honesty. That's why. Too good. तालियां आपके लिए. Malayali. तालियां. Yeah. Malayalis are pretty Sorry, honest. to say Yeah. ताली. चलो ठीक है. Okay, thank you. Bye. Right. Wow, Suresh coughed so hard that he destroyed his own microphone. How did you mute it? Quick. अच्छा वो हाथ से कर रहे हैं पता है कि उल्लू
I just realized that some of the, like that animation of Dwight and the guy from The Office, when someone subscribes, you see that animation over there. And it's right in the middle of when she's saying like everybody died and it was really sad and all, and these guys are going like that. Anyway, kuch karna padega uska. Just thought I'd बाप रे. mention it. I noticed it. But wow, bro. I don't think it didn't sound like anything bad was going to happen also. As in, you know what I mean? She was in transit. Yeah, it's an experience that somebody who is living went through. We've heard a couple of similar stories like this though, haven't we, Suresh? Yeah. Where a person has just died and like about a minute before that someone met them and hung out with them, and then the Yeah. other person comes and says, hey, yo, ye to margi? How can बाप रे. it be? Baap re baap. Whew. Kafi dargi wala stories. Do teen. Chalo, let's keep going. Don't worry, Suresh. We're reaching the end. I was thinking that, we were doing like what, 2.5 hours streams and stuff. We'll just do the streams for as long as we feel like it's good. Yeah. And let's not drag it out too long, because you know what the beauty of that is? Iske baad, then you can go watch maybe Netflix, Prime Video, I know. Hotstar. Reacher. I'm Have watching some Reacher. me time, guys. You're watching Reach Around? What? Reacher on Amazon. Not bad at all. Reach Around something else. All right, let's keep going. Let's see who we got. All right. This is Michael Scott. Oh, sorry. Oh, I didn't realize it was Michael. Sorry, I thought it was somebody else. No need to get offended, Nidhi. Yeah. Nidhi say, Dwight and that guy from The Office. Are you serious? His name is Michael Scott, the legend. Ah! अजीब है. So much of anger. No, I understand. I totally understand. Anyway. Inko, Anidhi? No, I should have replied to that. Are you kidding? His real name is not Michael Scott. He's Steve Carell. What do you know? He's my friend. Yeah. Steve को मैं सुबह ही फोन किया था. Steve. अध्यक्षा, वेलकम. आ जाइए आप. आपको अनम्यूट कर रहे हैं. You're saying नहीं चाहिए. Me time. Continue the stories. Sheetal. We will see what. Let me we can just do. mute the stream Hi, because बाप रे. डरा दिया I'm आपने. sorry. Okay, अच्छा. wait. Need to clean the atmosphere because it's too much light here. अरे पूरा घर का क्लीनिंग चल रहा है अभी. ये साइड में, अरे ओ किसी का कपड़ा बाहर है. Oh no, एक प्लेट में दाल है. No, that's actually my roommate. I don't know. बोलने में क्या वो जाता है? किसी को ऐसा फोन में बर्थडे विश कर रही है. You're sitting and watching the stream in the dark? No, I wanted to tell the story in the dark Okay, because thank God. वो थोड़ा ज्यादा हबूबू होगा उससे. ठीक है, सुनाइए. Okay. शुरू. First, I wanted to say big fan of you guys. Thank you. कितना sweet. I was an MTV teen growing up, so this is like making you feel really old. I'm 30 now, by the way. I have 3 more years to live. Great. Yes. So I'll just jump into the story. I moved to this place in Assam for work, and Awesome. we are about 7 of us, and we live in a rural Assamese style traditional house. So it's basically, we have 3 rooms in a row, and we have front doors and windows that open to the outside. And we have a very spacious front yard, and we have a veranda in front of the doors. So the day I moved in, I arrived here in the evening. I met all my new colleagues, and I thought I was pretty much tired. So I thought I'll just have some food and go to sleep. And I never have issues falling asleep in a new place. So I go to sleep pretty easily. So I went to bed about 11 p.m., something like 11 p.m. And I couldn't fall asleep. And half an hour later, I felt like somebody was watching me. So, you know, when there are eyes on you, you get this feeling that someone's watching you. Yeah, you So can I tell kept when someone's yes. watching you. Yeah. It's looking at you in your direction. at least, And yeah. I felt very uneasy. So I just woke up and
I looked out the window and it was winter, so the window was closed, but I felt that someone was moving on the veranda outside from one door to the other, or kind of, trying to peek through the window. And I chalked it up to being really tired and, I'm in a new place. Okay, maybe that's just my mind speaking. I'm a pretty skeptical person. I don't believe in the supernatural, so I just didn't think about it. And this kept happening for about a week. And this would happen every other day where I would feel that someone is watching me. And we used to have a cat at the point, and she would come in and just look in the corner and meow. And that freaked me out because I believe that animals do have something supernatural, some supernatural connection. So I was pretty freaked out about this, but I decided not to share it with anyone. About a month and a half goes by, and we were all having lunch, and I was like, oh, there's something very funny happened, that I felt like somebody was watching me, and all 6 of my colleagues just looked at each other, and then they decided to tell me that anyone new who moves into the housing has the same experience. So when you first move in, you sort of have this feeling that somebody is watching over you or someone is moving outside. If you're going through something troublesome, then you would feel that somebody is checking up on you. And so everyone here believes that that's the ghost of our landlord, who passed away right before we rented this place. So everyone thinks that it's basically him keeping an eye on us and making sure that we are all okay. But one of the colleagues was here before me, had a really bad experience where, she's here also with me. My roommate basically had this experience where she was sleeping in the room, and she had kept an old bed because she wanted a new bed. So she had asked the landlady to give her a bed. And at night, she felt as if there were people working on the bed, assembling the bed. And she felt like there were carpenters, like basically the carpentry sound. And she felt as if someone was working inside the room. So the next morning, she freaked out and she talked to the landlady. And the landlady said, "Oh, to maine tumhara uncle ka bed tumko diya tha." So, and she just returned it. And oh my so God. we never take anything that used to belong to the landlord. And you are still in the same place now? Yeah, we live in the same place. These uncle ko I bol dena apni taraf se. But in some way, uncle acha hai. Uncle never bothers us. I was just going to say that it sounds like you said, sounds like he's sort of checking up on the house, checking up on you guys, making sure his tenants are fine. I hope कि ऐसा ही scene है. That sounds very, but still very creepy. I had consistent goosebumps. I've never had goosebumps that don't go down. You know what I mean? Suresh, and also, like, it's weird because it's not just when we first moved here. It also, we went home during the lockdown, and even when we came back, the same thing happened with us for 3-4 days. Like, he was, making sure कि इतना दिन कहाँ गए थे तुम लोग, वापस आए, ठीक हो या. My God. Oh my God. Anyway, thank you for sharing. Damn you, actually, for sharing this story with all of us. But thank you so much. I hope you guys have. I hope you do get nightmares out of this. Yeah, definitely. I hope not. What to do now? 100%. Thank you. And Uncle will come visit you. Hey, please. मैं खुद uncle बन गया हूँ. Like somebody was saying, oh, this 40 now. So I will be that tenant. But thank you so much and best of luck to you and your friend and uncle and everybody who's in that house. But everything is fine ना? तुम सब लोग ठीक है and you all are being like taken care of and all. Yeah, हम लोग सब ठीक है. And like my landlady is really nice, and everybody around here says that uncle used to be a really nice,
a very generous person. So nobody has wow. anything wrong to say about him. That's great. So we sort of feel safe that, he's looking over us, making sure that we're okay. That's so sweet. I think like somebody's mentioned in the chat, someone say a little prayer for that uncle. Everyone drop hearts for uncle Yeah. in the chat just to be safe. वो घर पे आएगा. Anyway, thank you so much. Have a good one. Okay, bye. Bye. Every time I say thank you so much, I'm about to say her name, then I'm like, I'm scared I'll mispronounce it, so I don't say her name altogether. Adyaksha. बाप रे. Right? Adyaksha. अध्यक्ष Adyaksha तो आप हो सर. But अध्यपाक भी हूँ मैं. wow, that was damn creepy, Suresh, that story, but also sort of like heartening in some sense. I don't know. Yeah, I mean, after so many stories, one story where the ghost is a friend, actually like Casper, older version. Casper the friendly landlord, Yo, that kind of thing. yeah. All right. Okay, I can feel our souls leaving our body. Suresh, who's that standing next to you? Oh, cool. Yeah. So like I said, guys, we're not going to do this but the Puri Raat stream till the point where we're like, ek aur story, ek aur. We're going to do one last, that does look right, Suresh. We're going to do one last story for the night so that you guys and us, we can all have some us time. You can have your me time in our Discord server. Wahan pe they'll keep on doing these ghost stories till 4 in the morning because they're clearly insane. I mean, there's no other explanation. Aap aa jao Discord pe. Other options are you can watch Naked and Afraid, Suresh, from yesterday's discussion. You can watch yesterday's stream, then you can go to Discovery Plus and watch that naked survival show. Oh, damn, I forgot about it. Someone sent me a long paragraph as a DM on Instagram saying, "Dear Hoezaay, Naked and Afraid is not a dating show. It's a survival show. And in that show, people are surviving and it's about them being, that's their primal surviving rating." हाँ मैम, हमको सब नंगे लोग दिख गया तो हम मैं क्या बोलूं अभी. They're doing a bit of dating also. Come on, film shoot पे. Hello sir. Hello sir. Yes, hello. So मेरा डेटा ना मैं बाहर हूँ, डेटा का बहुत कम है, तो can I keep my video off? चलो Like, I आपके will show you लिए. my face and I will. हाँ. See, he knows us so well. Is it on एक sir? सेकंड अच्छे से देखने दो. Can you turn around? एक छोटा सा cat walk. Leave your phone there. Take a walk and come back. पूरा बॉडी देखने दो. अच्छा, रेडी सर, शुरू कीजिए. हाँ. Okay. Sir, so I was on this project, like short film था, और मेरे दोस्त का project था. So we were there shooting for it. So वो story भी horror ही था. Like we were shooting for a horror short film. और ना जो place था जहाँ पे हम shoot कर रहे थे, I won't take a name because it was a politician का बंगला. So we won't take a name. बट वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी था क्योंकि एक साइड पे पूरा गांव था, दूसरी साइड पे पूरा खेत था, कुछ नहीं था, पूरा का पूरा सिर्फ खेत ही था, और उसके बीचों बीच देयर वाज अ बंगलो एंड इट वाज सो स्कैरी कि जो हमारे कैमरामैन आए थे they were not coming in. They were like, are you guys really in there? Like तुम बाहर आओ हमको लेने के लिए, हम नहीं आ रहे हैं. So they were like they were not coming, so we went and we took them in. So उसके बाद क्या हुआ कि जो एक एक्ट्रेस थी हमारे उसमें, तो उसका भाई था, तो ही वांटेड टू सी द शूट हाउ इट गोज, तो इसलिए ना वो एक बार आया था, और वो बहुत ज्यादा क्रिपी बंदा था. तो उसने एक दिन क्या किया, आई वाज सो देयर वर टू रूम्स ओनली एंड जो फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम था वहाँ पे हम लाइक कोई नहीं रहता था बिकॉज बहुत ऐसा डरावना लगता था. इट वाज टू स्कैरी. और क्या हुआ, तो हम सब नीचे रहते थे एंड वी डंप्ड ऑल आवर स्टफ अप. तो हमने एक दिन क्या किया, तो एक दिन क्या हुआ कि नीचे सब मुझे नहाना था, तो आई वांट टू टेक अ बाथ, पर नीचे ऑलरेडी जो ये था बाथरूम था, इट वाज ऑक्यूपाइड. सो मैं ऊपर गया बाथ लेने के लिए, ठीक है. तो पहले इतना लाइक आई एम नॉट यूज्ड टू बिग बाथरूम्स एंड ऑल, तो वहाँ पे बाथटब था और पूरा खाली था ना. सो पहले आई वॉज टू स्कैर्ड. उसके बाद मैं नहा के बाहर आया, फिर ना आप ऐसे इमेजिन करो कि देयर वाज अ मिरर, और मिरर के पीछे ना पूरा ऐसा मतलब जो रूम का जहाँ पे रूम चालू होता है और डोर, उसमें ना एक पूरा ऐसा ब्लैक बोलते हैं ना, एक ब्लैक एरिया था. मतलब मिरर के पीछे देयर वाज ओनली अ ब्लैक एरिया. तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ एंड आई कैन फील कि समवन इज वॉचिंग मी फ्रॉम बैक.
पर ना मुझे कुछ दिखा ही नहीं से, आई एम गेटिंग अ गूज़बम्प्स, My God. समवन इज वाचिंग मी फ्रॉम द बैक, और मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, सॉरी मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि कौन है करके। तो मैंने क्या किया, मैं तो डर गया था बहुत, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने फटाफट से मैंने अपना चेंज किया, तो मैं नीचे गया। 11-11. पर हाँ. 11-11. तो फिर मैं नीचे जा रहा था, सॉरी चेंज नहीं, मैं चेंज कर रहा था, आई वाज इन द Okay. टॉवेल, ठीक है। फिर मेरा आवाज किसी ने पुकारा कि यश करके, फिर आई वाज लाइक कौन है, किसी का जवाब नहीं आया, तो वापस किसी ने पुकारा कि यश, तो आई वाज लाइक कि कौन है, इसलिए मैं गया नीचे और जाके देखा तो हॉल में तो कोई नहीं है, लाइक दे वर सेटिंग अप द लाइट्स एंड ऑल, सब बिजी थे। Oh तो मैं देखा shit. कि कोई नहीं है, तो मैं बहुत डर गया। और वो जो स्टेयर्स भी थे ना, तो ऐसा था कि स्टेयर्स पे आप ऊपर आओगे ना, तो राइट साइड में देयर इज अ टेरेस का डोर, एंड लेफ्ट साइड पे देयर इज द बेडरूम इन विच आई वाज देयर। आपने किसी से पूछा कि ऐसा मेरे साथ हुआ 11-11, ऐसा कुछ आपने पूछा उनसे? There were many stories, like we were there for 1 week, and बहुत ज़्यादा stories है वहाँ पे, but I'll tell you 1 or 2 because अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ. तो मैं वापस आया, फिर से किसी ने पुकारा, तो मैं नीचे जाके गाली दिया कि who the fuck is this, कौन, अरे डर लग रहा है, ऐसा मत करो। फिर मैं बोला चल fuck it, फिर मैं आया ऊपर, मैंने अपना कपड़ा पहना और जा रहा हूँ, और पीछे से सर किसी का ऐसा भयानक चिल्लाने का आवाज है, फक, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, इतना भयानक चिल्लाने का आवाज जैसा रहता है ना कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, दोनों मिक्स रहता है ना, ऐसा आवाज। एवर यू लाइक एक मूवी में कभी देखा आपने सुना होगा, वैसा आवाज आया। आई टर्न बैक एंड समवन रैन फ्रॉम टेरेस इनटू माय बेडरूम, फक। एंड कैसा हमारा क्या मतलब, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कैसा होना चाहिए कि लाइक मैं नीचे भागना चाहिए ना, मुझे पता नहीं क्यों मैं ऊपर भागा वापस बेडरूम में, और वहां पे जाके देखा तो देयर वाज अ बॉय, वो डार्क में ऐसा हंस रहा था, और मैं थोड़ा आगे जाके देखा तो दैट बॉय वाज जो हमारी एक्ट्रेस थी उसका भाई, जो आया था शूट देखने के लिए, एंड ही वाज डैम क्रीपी। मैं उसको बोल रहा है, अरे क्यों आ रहे हो, वो हंसे ही जा रहा है। उसके बाद एक मैं सेकंड, चिल्लाया ना तो वो चुप हो गया। तो वो भूत नहीं था? हाँ इट वाज, वो भूत नहीं था, लाइक मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा ऐसा डरावना चीज है, पर वो भूत नहीं था। और उसके बाद थोड़ा हुआ ना, तो वो हॉरर आप बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हम नीचे आए, वी वर टेकिंग अ शॉट, जिसमें हमने एक बंदे को बोला था कि तुम ऐसा जो डोर है ना उसके पीछे खड़ा रहे, और ना हमको उसके शैडो चाहिए थे सिर्फ। तो हमको सिर्फ ऐसा दिखाना है कि बंदा जा रहा है, एंड आफ्टर दैट वो एक ऐसे शैडो आती है, ठीक है। तो हमने उसको बोला तो क्या हुआ, हमने वो शॉट भी ले लिया, सब कुछ हो गया। तो बाद में बंदा आता है कि अरे सॉरी, मेरे को बहुत जोर से टॉयलेट आया था, इसलिए मैं गया, अभी ले लेते हैं। बोला अरे क्या ले लेते हैं, तूने दे तो दिया, मतलब वो हो तो गया। तो ही वाज लाइक नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था, मैंने कुछ ही नहीं, शैडो। बोलो हु द फक वाज दैट, हमने कैमरा चेक किया, देयर वाज अ शैडो, देयर तो वाज अ शैडो किसने दिया था? कोई नहीं था बंगले के अंदर, एक ही बंदा था जो वो हमको ये करने वाला था कि वो ऐसा शैडो सिर्फ प्रोजेक्ट करने वाला था, वो नहीं था। और अरे बाबा. उसके बाद मेरा सीन है ना, मेरा सीन इट्स वो तो मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसा झूठ भी लगता है, पर कभी कभी सच भी लगता है कि हो भी सकता है। क्या हुआ कि मेरे को लाइक सीन ऐसा है कि मेरे को डेयर मिलता है, वी आर पासिंग द पार्सल, वी आर प्लेइंग द पासिंग द पार्सल। मेरे को डेयर मिलता है कि हमको कि मेरे को क्या करने का, अकेला पूरा बंगले का राउंड मार के आने का है, सिर्फ इतना ही डेयर था, ठीक है। तो फिर मैं जा रहा हूँ, एंड वी आर टेकिंग द शॉट। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो लाइट वाला जो बंदा था ना, वो वो जो मैंने आपको बताया कि वो डरा, जिसने मेरे को डराया, ठीक हाँ. है। वो बंगले के अंदर से ही वाज वाचिंग, बाहर की शॉट ले रहा है वो, ठीक है। जो लाइट वाला बंदा है ना, वो उसकी तरफ देख रहा है, वो उसको स्टेयर कर रहा है, लाइक बहुत ऐसा डेथ स्टेयर होता है ना, वैसा स्टेयर कर रहा है। तो वो ना बहुत ऐसा डर गया, और उसने नीचे देखा। वो जैसे ही नीचे देखा, उसके सामने लाइट का बटन बंद हुआ। उसने हमको ऐसे बताया कि उसके, सीरियसली इज नॉट जोकिंग, उसके सामने लाइट का बटन बंद हुआ, उसके बाद पूरे बंगले की लाइट गई है, मतलब कुछ भी नहीं था। Wow, this is और better than Alexa also. वो आपने वैसा without तो saying Alexa वो बंद हो. इलेक्ट्रिसिटी गया होगा, आप जनरेटर पे थे या वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे आप? नहीं, यानी तो फिर क्या
तो But sir, वही कि sir, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का है। हाँ ये सर, सब घर में सब अजीब चीजें हो रही थी और some या were सर, some were like just a person, some were a ghost and you all were not sure. Sir, आपका वो पनवेल का टाइम निकलने का आ गया, but thank you so much सर हमारे ओके साथ ओके ये ओके शेयर ओके करने के लिए. ओके, Thank you थैंक यू sir. फिल्म का नाम क्या था? सर। इट वाज अनाउदा, इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, इट वाज लाइक अ प्रोजेक्ट फॉर सम कॉलेज और समथिंग। अच्छा ठीक है, ओके या ठीक है सर. समझ सो गया। कैन आई टेक अ स्क्रीनशॉट? फिर ले लो ना सर, लेकिन आप लेकिन नहीं आप हो ब्लैंक स्क्रीन है। पे. अरे आयुष्मान कैसे खुराना तीनों एक साथ कैसे देखेंगे? दे ना ये लो. अच्छा. अरे भाई आप तो सुरेश सर नहीं आ रहे? आप you can watch कैसे the होता है? YouTube video and then take a print screen. या श्योर बाय सर। All right, take care sir. Bye. Wow. Very interesting, Suresh. या क्या था? नहीं था स्टोरी इसमें. था नहीं था था. दे सुन था Strange. क्या था? नहीं था नहीं था 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 नहीं था 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 नहीं था 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 ना था 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 नहीं था नहीं था। ओए नाइस। था था थैंक यू. नहीं क्या था ना जुगलबंदी है. था Rubbish. नहीं था 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 नहीं था। No. Okay, we'll take one more story because ये थोड़ा थोड़ा anticlimactic. And someone in the chat already said it was her brother. How did you know the end of the story before it happened? Suresh is like, damn it, कोई तो ठीक से बताओ story. नहीं अच्छा था, प्रॉब्लम नहीं था। नहीं अच्छा था. That See, because I and was worst is I in was all these sleeping. bhoot banglas and all. Yeah, I have shot in one fort, very spooky fort. Oh my god. Anywhere far out shooting is spooky yaar, because people take all these crazy places and they like to go to shoots where are really far out. But the Mud Island का last bungalow में. Not the first one. दानिश खान आपके लिए ये सोनी लिव पे है। क्या? भूतकालम कहाँ से डाउनलोड करूँ? Okay, we lost our previous caller. अरे Is that a sign? लेकिन आप सब लोग MX प्लेयर डाउनलोड करो। What? What the hell are you talking about, Suresh? I'm just Alright plugging my guys, new अभी job. अभी कुछ भी हो जाए ना, ये अपना last story है आज के लिए. चलो And then ठीक we'll है। see you then Yeah. next week. ये मी टाइम कम हो रहा है. आपका मी टाइम, हम लोग का मी टाइम एकदम कम Hey, हो I'm रहा working out with the rubber band. See? है. Nice. Your one-steps will really like. Hello, good evening. Priyanka Kar. Hi. Hi, Huku. I didn't Hi. expect to get in. Oh my God, you shrunk yourself and you're sitting in the grass. कैसे आप? Yeah. क्या चल रहा है? कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या आपके पास First of भूत वाला स्टोरी all, है? I would like to say yes, I have a lot, but I'll select my hostel की stories, which are kind of सुनाइए. creepy. And सुनाइए. I'm calling from Bhubaneswar. Welcome to the stream. I'm a big fan of you guys. I'm That's 26 sweet. and I've grown up looking at you guys on everything. I mean, thank you. Okay. सुनाइए. Okay. So, now my college was in Bhopal and it's like in the outskirts of the town. So completely खाली बंजर जमीन और बीच में hostel है. So me and my roommate in our second year we moved to a different room. जो first floor पे था and first day I was alone in that room and I was exhausted. I reached hostel and I just didn't unpack. I just went to sleep. And in the middle of the night, I felt like there's someone in the room who's like looking at me constantly. And I woke up and I see that there's no one. And I thought, okay, maybe I'm exhausted and that's why I'm like seeing something. I'm half sleepy and stuff like that. Then a few days later, actually, since I was an architecture student, we had to work really late, like till 4 o'clock in our studios. So my roommate was in the room alone. It was a winter night, and it was very quiet. It was very quiet, so you can hear anything, like a pin drop as well. And she had left the door open for me to come in, and she was reading a book with her back towards my side of the bed. So she heard the door open and then someone like walk in and then sit on my bed and then take heavy breathing sounds, all right? And she was like, Priyanka, is that you? Without turning back. And then she kept on hearing that heavy breathing sound, all right? And then she was like, Priyanka, come on, stop kidding. And she turned around and there was no one. And the door was closed, latched from inside.
And when I came back, she was awake and she was so frightened. At 4 o'clock, she was like, "Priyanka, you don't know what happened," and stuff like this happened at like 1 o'clock. It was, I thought you came back, and I was like, "Don't worry, it might be just some wind or something." I'm a very skeptical kind of a person, so I was trying to debunk the story. Just to a year later, I'm alone in the room. We had our summer vacations on. I didn't get a ticket to come out to my home, so I had to wait. Me and one of my other friends were the only ones in the hostel floor. So I was just packing some gifts for my family, and then my room door is closed. We had a balcony door and an entrance door to the room. So the room's door was closed, and I was packing, and I hear the door open, and someone come in and sit behind me when I'm packing. I was sitting on the ground and packing, and sit on my bed behind me, and breathing really close to my ears. So I thought that it's my friend. So I was like, "Hey, see, I packed this so beautiful. It looks right." And I was like, "Come on, tell me now, why are you holding it off?" And then I looked back and there's no one, and the room slashed again. And I was like, okay, might be that story affected me so much. I'm just imagining that. So I went to my friend and I told her that maybe if I am scared, I'll just come to your room at night and I'll sleep here. Don't want to sleep in my room alone. And I just said that, and I went back and went to sleep because my train was the next day. While I was sleeping, since I was so scared, I had my switch on. I had latched both the doors, and we had coolers because it was so hot. And you know, the cooler sound is so loud, you don't hear small noises and all of that. So I'm sleeping, and achanak se, I hear someone very close to my ear saying Priyanka in a male voice. And that breath you get when you whisper near someone's ear, it hits me, and I wake up from deep sleep and I feel like, oh, shit, I thought that someone entered my room. I just ran for my life, and I opened the door and I banged on my friend's door. I was like, "Hey, there's someone in my room. There's someone went into my room," and she took up a knife and she went to my room to see, who's there for protection. Wendy's. And then when she went in, she's like, "There's no one. Your room is latched from both sides. Just the door is open. The main door is open from which you came out." And I was like, "Fuck!" And after that day, we actually kind of changed rooms, and there have been so many stories that has happened in that room alone. So many nightmares we both have faced, and the same kind of me and my roommate. Wow, that was really creepy. But the one thing I can say about this ghost is that they're very polite, very thoughtful. Whenever they come in, they lock the door, and then they're like, "मैं lock किया, अभी lock था, मैं वापस lock किया." Yeah, it is not that the Dharana sound that they heard from the juice guy, na? 25 रुपया. My God. Anyway, Priyanka, thank you so much for being on the stream with us. Thank you so much for having me. Thank you so much. Thank you. Have a good one. Thank you. My God, wow. See, we know if anybody whispers in our ear, then it's definitely a ghost, because अपने घर में सब चिल्ला के उठाते हैं. Yes, Suresh. हाँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं. I saw your lips moving. कैसे? How can you see that? अभी देख. Look, you and I can talk without going eyeless. Okay, I can easily talk to you. तेरे को क्या लगता है? तेरे क्या लगता है? तू ही कर सकता है, मैं ही कर सकता अरे वाह, क्या? Can you see? अच्छा. एक second. Can you see? अरे वाह, क्या स्मार्ट है रे तू. दिख रहा सामने. देख, तेरा नेचुरल डाउरजन है, इसके तेरे को पता ही नहीं चलेगा. Anyway, everybody, I just want to say thank you. Suresh is like at the end of school when the teacher says it's time to go home. सबका energy एकदम ऊपर हो जाता है and they're ready to go home now. But thank you so much, everybody, for being part of Ghost Stories. Not to worry, we'll come back next week again. On Fridays, we will do the Adbhoot things. The panelists are very excited. They will come back and we will discuss all kinds of Adbhoot things. If you have any Adbhoot things, please come to our Discord. Leave it there. We have a special channel. You can even leave it in the comment section and leave your name so we can say, "Hey, Sheetal
or Demon Dusk, or Zen, or Hiren Patel, or Alpesh Patel, or Rakshish Shetty, or Vaibhav Shirke, or Shamya Fareen, or Mistri Now. Sorry, you get the idea. We can say that these people sent us these Adbhut stories. And of course, do not forget to go. I've lost the accent completely. I know. Oh no, it was there. You must go to the description of this video. Go to Suresh Menon's Instagram. Give him lots of love. The person who made the amazing artwork today, Peshabi, Bhalu, Sarvesh, the Discord people who helped me set up all this, Suresh. This for in case 2, 3, of course, Cyril and Cyrus give us thanks. So that's what it looks like. That's what my life looks like. So that's it. Yeah, thank you, Jagu Dada, and everybody who sent us messages. Oh no, get out. Don't you dare try it. No. Yee. मैगी हेलो गाइस तुम लोग का हो गया ये सब घोस्ट स्टोरीज क्या करते तुम लोग शी मैं तो नहीं डर गई बहुत लोगों का नाम बोलना भूल गई मैं इसीलिए तो मैं आई कुछ लोग उधर लिख रहे थे कि हो ये you forgot my super chat तो इसलिए मैं आई तो let's do all that सुरेश फिर हम लोग बाय बोलेंगे आप लोग तब तक कुछ जो आपको बोलने का नहीं आप बोलिए The Indian always says don't end stream early. Hoezaay, please. Last shooting वाला story was बकवास ऐसा end मत करो. More stories please. देखो ऐसा दे life. This is training for life. Life में आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता है. Just kidding. We'll try. Abhishek says, Hoezaay, you are national hero, and Suresh sir, you are a legend. Thanks for what you do. By the way, Hoezaay, how was Loop Lapeta? Not a paid fan. It was really good. In fact, it was shot so well, very slick. एकदम कड़क. मैं तो वो chocolate सबसे ज़्यादा enjoy करी हूँ. But आप देख लेना, it's actually pretty good. It's a remake of Run Lola Run. They bought the rights and everything and they did it. Not really a remake, more like an homage to it or whatever. Let's not get too much into that. Abhijit says, Yee, Suresh sir, popcorn khatam. Yee. Mufid says, you guys need to definitely call Dr. Solangi on your show. Jin cast is the shizness. Love from Qatar. Yee, हम लोग बात करेंगी सोलंगी जी से देखते हैं. The Indian always says, Hoezaay, please keep stream on till 12 a.m. like before. We enjoy your stream. Love. Don't end early. Manu from Bangalore. Manu, तुम मानो ये नहीं मानो हम लोग को अब हम लोग बंद कर ही ले आज के लिए. सुश्रुत जी बोलते हैं कि ई मैं तो डर गई सर. ऑलमोस्ट देयर तेरे ड्राई मत हो रहे. हेडन जॉर्ज बोलते गुड जॉब गाइस कीप इट अप. अगर जगह है रखने के लिए ऊपर तो विल कीप इट अप. डोंट वरी सर. थैंक यू. आई न्यू सुरेश लाइक दैट स्टूपिड जोक. सनादा बेगम सेज बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए आपके लिए भी. और बिस्मिता सेज गुड टू हैव यू गाइस बैक. गुड टू बी बैक. मजा आ रही ले. सुरेश आपको तो मजा आ रही ले ना. मेरे को बहुत मजा आ रही लग तो रहा है. बिस्मिता थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सुन्यप सेज होएक्सी बाय ओपी. होएक्सी बाय मेरा नया नाम होएक्सी. Like that was it? Hoezaay Churvelo. Somebody called me Jose Churvelo or something. Paddy says, really appreciate all the new additions from the background to various effects. Hoezaay 10 on 10 for the efforts. Bhai. Yes, मैं भी agree करती. कितना मेहनत करने वाला आदमी है ये Hoezaay जब भी 2-3 घंटे के लिए. बिल्कुल नहीं किया. आप पूछ नहीं रहे थे. सॉरी आप बोल सॉलिड हेल्प किया आपने. By not doing anything. अरे बेचारा दानिश खान अभी तक जूम कॉल पर वेट कर रहा हूँ स्टोरी सुनाने के लिए. नेक्स्ट टाइम आप आ जाना. सॉरी दानिश आप आ जाइए डिस्कॉर्ड पे. कम गाइस समबडी ड्रॉप द डिस्कॉर्ड लिंक. उनको आने दो. आन दे हवेली पे आन दे. तरुण सोनी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड दैट्स इट फॉर टुनाइट एवरीवन. चल परिणीति अभी तू निकल. मेरे को मेरा स्ट्रीम है मेरे को बात करने देना. हाँ ये सब मैं सुरेश सर से ही सीखा. What nonsense. Anyway guys, yeah you could have finished one story by now, but देखो हम लोग अब स्पॉन्सर लोग का तो ख्याल रखना पड़ता है. अच्छे से पैसे दे रहे हैं वगैरह. एक दिन स्वीट्स नहीं खा रहे, एक दिन खाना नहीं खा रहे. वेरी स्वीट. वी अप्रिशिएट इट. थैंक यू एवरीवन. बट even more than super chats and stuff, it would be amazing if you guys could share this nonsense that we do. Please hit like, leave a comment, subscribe. But
one tchki, even more important than that, go to the people who are making the artwork. Yeah, the artwork. And of course, not just the artwork, the one, the only, the man with the viscosity and the consistency. Or Suresh Thank you, everyone. I hope you had a good time. Take care. Suresh, I'm going to press the button. Oh, Okay? one second. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Hoezaay Kowako. अरे वो तो सो गया है. Oh. I have been snapped out of existence by Thanos. Take care, guys. Have a good night and enjoy your weekend. Enjoy your me time. Thank you, Suresh. Good night. Thank you. Good night. Mods, Harami chat. Love you. Good night. Take care. Bye, लोग. Hey. Bye. मैं दबा रहा हूँ बटन ना अभी सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ दबा रहा हूँ hey, खचाक